Do you have any doubt? I mean, like, do you guys have any doubt? Someone is asking question, or I guess you have unmuted by mistake. Okay, let it be. So, I mean, if you have any doubt, you can mute yourself, or we can type on the chat box, right? So let's see. I guess recording has started now. Right. So this is going to be recorded, and you'll be getting that link. I mean, if you have facing any issues in the installation, you can check the video again. Right. So let's suppose in here we have, I guess now we can see the installation part. Here you have to simply type Python. Take this. Yeah. So this is for the Python. I mean, either you have Windows, Ubuntu, Linux, whatever, or even if you're on the Mac OS, they have all the support. Okay. So whatever the system you're on, it will show you for that only. Right now I'm on the Windows, so it is showing me for the Windows how to have to download. Okay. So you have to simply write on Google this. You can simply write this Python ID download, or you can skip this ID also. Just write this. I'll just pass in the chat box. Okay. So you have Google पे paste कर दो and you'll be able to download it. Okay. So the first link would be for this Python. We have to install this. Otherwise, this is the kind of compiler interpreter, right? So for the C language, we have a different turbo C, okay, जो run करता है code को. And in here, for the Python, we have different. We have Python this. So this is the latest one. If you are on the other operating system like Linux, so you have to go on this link. So this is for the Linux. I guess you should be installing this around August 1. So this would be better. Yeah. So in both the options you have to unzip it in the Linux. Yeah. And for the Mac OS, if you're on the Mac OS, this is the link. Here again, the preferred would be for the August one. Okay, so this is the stable version for the Mac OS. Okay, I guess this will automatically download, right? So here, these are the links. Okay, I'll just say in the chat box. So this is for the Mac OS. I mean, if you're on the Mac OS, you should be using this link. And for the Windows, I guess this is the first page you'll be seeing like this. So there is a button download, right? You can simply download it. Okay, as I've already downloaded it, so I'll just show you. कि आप download कर लोगे because this is the important thing. Otherwise, your code will not run, right? So just a prerequisite. Even if you are working on VS Code, जैसे हम लोग VS Code में करेंगे, so it is easy to see there, right? So let's suppose this is how it is installed already, right? This Python, and simply we have to double click and install. Same process is there for the Linux. For the Linux, it would be different. There is a command. Okay. So that command is sudo apt install और फिर वो file का name. That's it. ठीक है. If you're using a Ubuntu system or Linux, right? But mostly, I guess, आपका ऐसा कोई है क्या? Is there anyone who is using Linux or Mac OS? The installation is little bit different. Windows पे direct click करके install हो जाएगा ये, like this. Okay, so it will show a pop-up. It might not be visible for you. So there would be, I'm not sure this is visible. Visible, this is visible. So make sure to check this box, right? This one. ये जो नीचे वाला icon है ना, add python.exe to path. ये क्या करता है? This is actually setting your environment variables. ठीक है? तो make sure वो tick नहीं होगा. Make sure to tick this. Okay, in the Windows, and then you can just simply click on install now. So it will automatically install, right? Is it clear? Is it clear? See, I mean, this is for if you want to run the code. Okay, even if you want to use any online tool or something, still you need Python. Okay, online compiler is a different thing, but आपको कोई tool चलाना है तो अपने Python कैसे बनेगी एक्सेल में? sorry. सॉरी उसमें पावर पॉइंट सीपी के नंबर मिलते हैं और लास्ट में 4 नंबर Ista, you are asking something? You have any doubt? I mean, your mic. Yeah, okay. ठीक है. I mean, if you have any doubt, you can ask, but just make sure कि आप mute करो. ठीक है. Until if you have any doubt. So this is what I was saying. In here, this is the step if you want to do. I mean, if you want to do code by side, ठीक है? Because if you're not doing the code, you'll not learn anything directly. मैं बता के चला जाऊंगा, it'll be like you'll be forgetting afterwards, after 1 or 2 months. So make sure आप code करते रहो साथ में, ठीक है? और मैं code I'll be sending in that same group also. I guess you had a group, I guess. So I'll be sending to the team, and team will send you the code जो भी हम लोग करेंगे. So for the reference, you can have for the future, you can just learn from here. Okay, जो भी learn करेंगे, and we'll be having this kind of notes. Okay, for the code, whatever you're doing.
So I hope this installation you can do, and download करने के बाद में this make sure to check this box, ये add python.exe path वाला, ठीक है, the last one, तो ये पे टिक होना चाहिए blue, and then you can just simply click on install, फिर install हो जाएगा. And how we can confirm from the terminal? So you have to simply type cmd, the command prompt. I hope everyone knows about command prompt. यहाँ से हम लोग कंफर्म करते हैं कि पाइथन आपका इंस्टॉल्ड है कि नहीं. सिंपली टाइप पाइथन स्लैश वर्जन, ठीक है. सो इट विल शो मी लाइक दिस. अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं होता, सो इट माइट गिव एन एरर, ठीक है. सो इट विल गिव एन एरर, योर पाइथन दिस इज नॉट इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, ठीक है. तो वो टिक इसलिए करते हैं कि सी ड्राइव डी ड्राइव सब पे चल जाए. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स. तो इंस्टॉल करने के टाइम पे फॉर द विंडोज मेक श्योर आप वो टिक कर लो, ठीक है. अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है. इट विल शो यू हैव टू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बाय योरसेल्फ मैन्युअली. To avoid that thing, we should be using that, ठीक है. तो वो चीज़ ये कर लेना. Python would be installed like this. ये this is the confirmation. So this is the command to check the version of Python, ठीक है. मतलब कि आपका Python installed है system पे, just for that. So this command you can check, okay. Again, anyone have any system apart from the Windows? Okay, I mean if you are on the Linux or Mac OS, कोई problem आएगी installation में तो just let me know. Okay, अगर कोई ऐसा आएगा, so we'll be just doing for the VS Code as well. So there is a good ID, okay, for even for the beginners and for the experienced developers. So we have this VS Code. Okay. So again, we have this option for Windows, and the same goes for Mac OS and Linux. So if you're on the Windows, you have to simply click on this button. Okay. So this is the Linux. This is the ID, which is kind of suitable for the Python and Java as well. Right? Even you can run the C code also. आपको बस install होना चाहिए system में, and you can run the C code also. Right? You don't have to always use the Turbo C. Okay, I mean those who are learning C language. So you can do the same C code also in VS Code. Okay, and it is quite helpful because we have a lot of extensions. आपका code जो दिखता है वहाँ पे. So we have this auto suggestions in here. ठीक है, जो suggestion अपने को मिलते हैं. Like if I just type PR and I'll be getting suggestion for print. ठीक है, so code writing would be easier, and the colors will make it kind of more code readable. Okay, कि if someone is reading your code, it will be more readable, and even if you are reading the code, मतलब कि आप कोड लिख देते हो और काफी ज्यादा कोड हो गया, तो उसमें प्रॉपरली दिख जाता है वो कोड, ठीक है. ऑनलाइन कंपाइलर्स में इट इज नॉट पॉसिबल. तो दैट्स व्हाई VS कोड इज प्रेफर्ड. तो ये सही है. आप चाहो इफ यू वांट, आइदर आप पाइथन का आइडियली भी यूज कर सकते हो जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया. सो जस्ट लाइक दिस इज द आईडी फॉर द पाइथन. ठीक है, this is the basic one, although we doesn't use this. I mean, if you want to see few things, you can check on here. So this is the basic Python ideally. एकदम simple सा है, just like the notepad. So this is like the interpreter, command based. मैं कुछ भी command यहाँ पे देता हूँ, and it will be executing that same command like this. Let's suppose if I just say hello, ठीक है, just like a hello world, and so it will simply say hello, like this. So it's like whatever the command you're giving, it will give the response directly. Okay, so it will compile and give the response directly. So this is the basic thing. Okay, if you want to do on this, but I prefer VS Code. So whatever we are going to learn, we'll be doing on this VS Code. Okay, हम लोग VS Code पे कर रहे होंगे. So I hope this is clear. Anyone have any doubt in the installation? Just let me know. Okay, this is the thing. I'll just share this thing as well. Okay, so you can simply search. I guess that's already there. Okay, so just install this. VS Code is quite simple. VS Code में कोई प्रोसेस नहीं है आपके पास. इंस्टॉल कर लो. क्लिक जब इंस्टॉल हो जाएगा, so .exe को you have to just double click and it will directly install. No changes. आप next करके इंस्टॉल कर लो. It is around 60 to 70 MB only, right? Maybe 90. Okay, so small app. It does not will not be taking much space. So I hope this is it for the installation part. Okay, so we'll be doing this code in here. Whatever we have, we're going to learn. So this is the first day. Okay, I'll just create a folder. I think this is the day 2. Okay, here we'll be having this, the main.py. So yeah, so basic thing is in C language, just let me know. I guess those who have already learned about the C language, you can see the .py, right? This is the file extension. So what is the file extension for C language? Can anyone tell me? What is the file extension for the C language? Anyone have any idea?
नहीं नहीं, द सी लैंग्वेज, फॉर द सी लैंग्वेज, पीवाई तो इज फॉर द पाइथन, ठीक है। फॉर द सी लैंग्वेज व्हाट इज, दोज हु आर लर्निंग, जिन्होंने लर्न करा डॉट मे बी सी, जावा, डॉट सी। डॉट सी, The एग्जैक्टली। dot सो C. देयर इज, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, डॉट सीपीपी इज आल्सो देयर, राइट? इफ एनीवन हैव हर्ड, देयर इज आल्सो, मैं चैट बॉक्स पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देयर इज वन मोर, अगर किसी ने करा होगा, सो दिस विल आल्सो वर्क फॉर डॉट सी लैंग्वेज, सीपीपी, दिस इज सी प्लस प्लस, राइट? आप ये C plus. एक्सटेंशन भी रखोगे, स्टिल इट विल रन, राइट? तो दोनों काम कर जाता है, बिकॉज दे द बोथ लैंग्वेज आर सिमिलर, फ्यू चेंजेस आर देयर इन सी प्लस प्लस। तो ये वाला कोड, ये वाला फाइल भी होगा, सेम कोड होगा, स्टिल इट विल रन, राइट? तो ये चीज होती है। तो देयर आर टू एक्सटेंशन, डॉट सी इज टोटली करेक्ट, एंड रिसेंटली देयर वाज सीपीपी। रिसेंटली क्या, देयर वाज बिट ऑफ टाइम, जो पहले से आ रखा है सीपीपी। सो दिस इज द फाइल एक्सटेंशन, okay? So this is for C language, okay? So this is for the C language, but for the Python we got this dot py. In the online compilers also you can see we don't have one more than one file extension, as much I know. So we have only single dot py. So every time we are creating any file or Python file, okay, you have to give this extension. If you are writing anything else, dot txt dot anything, that will not run, okay? It will not consider that particular code or text as a Python code, ठीक है? तो Python code के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, and this is for your Python, ठीक है? I hope it is clear. So this is for the Python. We don't have more than one right now. It is, this is for the Python, and this is for the C language. Okay, so again we are not learning C, so just let it be like this. And now we'll again jump to the fundamental part. Okay, so whatever we have done, we'll be again keeping that mind. Okay, so we'll be learning that indentation meanwhile writing the code. So जो भी हम लोग code लिखेंगे, we'll be learning in the same way indentation के बारे में, because until we are learning while loops or for loops or maybe functions, तब तक indentation का there is not much role, ठीक है? So we'll learn that, okay, while learning the for loops and while loops in Python and functions also, ठीक है? Then we'll come to the object oriented programming, ठीक है? So it'll take one or two sessions, because we cannot directly jump on that part. Yeah, so first let's understand again few things in here. So in the fundamentals of Python, we have few things involved, like statements. So can anyone tell me what is a statement in any language? I mean, generally what in the programming language term. Okay, I'll be explaining that. Okay, those who are like from the biotechnology, I guess you might we didn't have this programming class before. Maybe you haven't gone through this, so I'll explain. Those who already know, can anyone tell me what is statement? I mean, like, what are the statements? किसी ने कभी पढ़ा है इसको? Statements क्या होते हैं? Block of code. Exactly. That block of code we call it statement. Yeah. Someone saying other answers for that statement? Pure answer इसके लिए. That block of code is correct. Can we say it any other way? Do we have any other answers for that statement? और कोई चीजें हो सकती हैं statement के लिए? Sir, instruction for a code. Exactly. So that is function for the code in the form of block. ठीक है, that is a statement. स्टेटमेंट्स का मतलब जैसे हम लोगों ने लिखा था ना, ये वाला स्टेटमेंट लिखा था, जो कि which was kind of technically wrong in the last class. I am hungry. So this is a statement in English, right? This is nothing but a statement. ये तो स्टेटमेंट ही है, ठीक है? मतलब एक स्टेट कर रहा है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, प्रॉपरली करेक्ट। एक स्टेटमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। सिमिलरली वी हैव स्टेटमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज। जो भी हम लोग कोड लिखते हैं इन द ब्लॉक ऑफ कोड, दैट पर्टिकुलर कोड इज लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर which is being compiled by the interpreter, ठीक है? And afterwards that compiled code would be like again converting into binary code, और फिर वो एक आउटपुट रिटर्न करेगा फॉर द इनपुट, राइट? दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। जैसे आपने ये लिखा, किसी को आप मे बी आप आस्किंग फॉर व्हाट इज योर नेम, ठीक है? दैट इज अ स्टेटमेंट, ऑब्वियसली अ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, मतलब आप पूछते हो जस्ट लाइक अ इनपुट। तो जिससे आप पूछ रहे हो, एंड मे बी ही और शी विल बी रिटर्न लाइक गिविंग द रिस्पॉन्स बाय हिज और हर नेम, राइट? ऐसा होगा, सिंपल। तो उस इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलता है। आप किसी का नाम पूछते हो, आपको वो नाम पता चलता है अगर वो बताते हैं, ठीक है? सेम गोज फॉर द स्टेटमेंट। सो वो भी जो भी चीजें लिखते हैं हम लोग, वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, मतलब कि कंपाइल होने के बाद में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो स्टेटमेंट मतलब जैसे भी ये लिखा हुआ है प्रिंट, तो प्रिंट इज अ सिंपल काइंड ऑफ मेथड विच प्रिंट्स ऑन द कंसोल, ठीक है? तो कंसोल आपका ये होता है जहाँ पे चीजें रन होती हैं। सेम गोज फॉर द ऑनलाइन कंपाइलर। तो दिस इज योर कंसोल, और यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ चीजें लिख देते हैं, जैसे लाइक इफ यू राइट
hello world. Same goes for the C language or any other language for the Java also. Or let's go, let's suppose you have to save this file, and let me remove this one first. ठीक है, and if I simply execute in here, so I'll show you कि कैसे यहाँ पे VS Code में रन करते हैं. This is quite easy. तो यहाँ पे दिख के आएगा आपको, ये कुछ कमांड वो है उसका कमांड रन करने का. Then afterwards you'll be seeing this output hello world. ठीक है, like this. ऐसा कुछ होगा. So ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है. Okay, so I can write the comments in here. So this is a statement for printing. Okay, the hello world, whatever. I'll just give it a comment. Okay, so there is one more part related to the coding in here. So which is, I hope this statement is clear. Okay, for them who doesn't know. So statement is just like a block of code or any line, let's suppose written, the code written. Okay, that is called a statement. Again, there is a category in the statements. We'll learn that. There is one more part which is comments, unexecutable code, right? ये पता है कि comments पता है? What are the comments in programming languages? Any idea? Comments के बारे में idea किसी को? Comment is used to describe the content of the code, basically Exactly. explaining it. For explaining the code, we write the comments, right? Or yeah, so comments are not compilable. Exactly. So non-executable code you can say. ठीक है, और compile भी नहीं होगा. The same thing. So this line written, the line number 2, which is a statement, not a statement. This is a comment actually. ठीक है. So this line number 2 जो लिखा हुआ है, ठीक है. So this is a comment. ठीक है. और यहाँ पे एक short keys होता है, जो जैसे मैं comment इसमें कर दे रहा हूँ. I'm not writing hashtag. I'm simply writing this. I'm hitting this control, the short keys for this, control plus this. Okay, so this is for comment, giving a comment in VS Code. Okay, which is quite handy because if you are commenting 3 lines of code directly, I can do this as well. Let's suppose if I have written, even I can repeat like this. Okay, so this is again few shortcut keys I'll be telling. Okay, meanwhile whenever I'm explaining the code, I'll be telling few shortcut keys because कई बार हम लोग को block of code को repeat करना होता है. So we'll be doing control C, control V. Even better than that, we have this alt plus shift. ठीक है, वो बाद में बताऊंगा मैं. जैसे अभी इसको मेरे को पूरे को कमेंट करना होता, so I can simply write control plus like this and this will comment it out, right? So this is like few shortened keys which is quite important. So same goes for this. Okay, which is not related to coding. This is the function which VS Code provides us. ठीक है, आपके उसमें भी रहता है कि ऑनलाइन कंपाइलर में we have the same thing. So control plus backslash is commenting the code, any language. ठीक है, works the same. So this line number 2 is not a statement. This is a comment. ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है, इस कमेंट है, ये लिखा गया था इसके लिए फॉर दिस वन कि print hello world is a statement for printing hello. ठीक है, but this particular thing which is written, it is a comment. Comment is the unexecutable code right in here. ठीक है, so I'll explain it one by one. We are just getting a brief idea. So unexecutable code means the code which doesn't get compiled or run. ठीक है, it is simply there for explaining the code. That's it. ठीक है, जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं इन डिटेल. लेट्स सपोज इफ आई गिव एग्जांपल इन रियल वर्ल्ड फॉर द मैथ्स, so we can even get the answer, we can directly write the answer for any maths question, but for getting the marks we should be doing it in step by step form. ठीक है, so obviously there is a step by step thing which is different, but why we do it, to explain the thing whatever we have done. ठीक है, अगर hypotenuse का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, so we should write that formula also, that is like a comment. ठीक है, डायरेक्टली हम लोग को तो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, बट स्टिल टू एक्सप्लेन द टीचर और एनीवन कि हम लोगों ने वी हैव यूज्ड द हाइपोटेनस फॉर्मूला, राइट? तो फॉर एक्सप्लेनिंग दैट थिंग, योर पर्टिकुलर मैथ एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेम कोड के लिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं, सिंपल. ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं होता, देयर इज नो सिंटैक्स फॉर दिस. द ओनली सिंटैक्स इज वी आर यूजिंग हैशटैग. ठीक है, so this is how we give the comment. If I just simply use hashtag before print, this is the comment, right? This is not a statement. ठीक है, तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल नॉट सी एनीथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा. आई विल शो अगेन, यहाँ पे रन करने पे कुछ नहीं आएगा. ये मतलब एक कमांड है जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज अ कमांड टू रन इट, तो वो ऑटोमेटिक कमांड लिख देता है. ये बटन एक यहाँ पे VS कोड में, सो इट विल सिंपली रन दैट पाइथन फाइल एंड इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज कमेंटेड. ठीक है, तो लिखा तो हुआ है कोड, दिस इज अ पाइथन कोड, बट नथिंग इज देयर, नथिंग इज एक्सिक्यूटेबल, कुछ लिख कर रन करने लायक कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. सो दिस इज अ कमेंट. आई होप इट इज क्लियर. सो अगेन वन मोर थिंग इज, इन ऑनलाइन कंपाइलर्स वी कैन नॉट सी द सिंटैक्स एरर्स. यहाँ पे आपको दिख जाते हैं पहले ही कि वो बता भी देगा.
कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन हियर, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम फिक्स करने का भी इसमें रहता है अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई अगेन वी आर यूजिंग वीएस कोड, जो आपको पाइथन के भी आइडियली में नहीं रहेगा, ठीक है, टू राइट द क्लीन कोड। आपका कंपाइल एरर इट विल नॉट बी इवन गेटिंग कंपाइल एरर, यहाँ पे ही दिख जाएगा कोड रन करने से पहले इफ यू हैव एनी कंपाइल एरर्स और नॉट, ठीक है, so that's why again VS Code is preferred. So now we have the expression statements. I'm just writing this heading wise. So again afterwards we had variables. So today we'll be directly starting with this variables, and by variables we'll be covering the statement and expression. ठीक है, तो statement is a simple thing. कुछ भी चीजें लिखी होती हैं just like in a normal day to day life, हम लोग कुछ भी statement लिखते हैं in English language, तो वो एक meaning denote करता है. Same statement we are writing in Python code, वो एक meaning denote करता है compiler के लिए to convert कोड एंड वो हम लोग को आउटपुट लाके दे कुछ भी, ठीक है, जस्ट लाइक गिविंग एन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, सिंपल थिंग. मे बी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इनपुट एंड आउटपुट थिंग. तो कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट लेगा आउटपुट जनरेट करेगा, सेम सेम गोस फॉर दिस पाइथन कोड. हम लोगों ने कुछ लिखा है काइंड ऑफ वी नॉट गेटिंग एनी इनपुट राइट नाउ, यहाँ पे इनपुट, बट दिस इज जस्ट लाइक अ इनपुट टू द पाइथन कंपाइलर कि आप ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आप कंपाइल एंड जस्ट गिव मी द आउटपुट, जिसको एग्जीक्यूट करने पे मेरे को हेलो वर्ल्ड लिख के देता है. ऑल तो जो लिखा हुआ है वही प्रिंट हो रहा है. आई नो लाइक दिस डजंट मेक एनी सेंस, बट दिस इज जस्ट द सिंटैक्स, ठीक है. दिस कोड लिटरली डजंट मीन एनीथिंग, कोई मतलब नहीं है इस कोड का. इट सिंपली रिटर्न्स व्हाटएवर इट इज रिटन इन द कंसोल. कुछ कर नहीं रहा है अपने लिए, ठीक है, नॉट इवन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक सिंटैक्स है वो सिंपल सा, ठीक है. So here we have few things which is fundamental in the Python or any other language. So expression will be seeing soon. We'll be seeing afterwards and like after this variables. So again we have few more things. We have constants. Okay. So sir, first tell me about the variables. Anyone have any idea about the variables? Variable के बारे में किसी को idea? See, those who don't know, just don't worry. Okay, I'm just asking for them who know. Okay, I can check if you guys like remember that thing or not. What is a variable and programming language, any programming language? So Exactly. container So where they we are. Yeah, yeah. Sorry. so where we store the Containers. value of. Exactly. So they are like the containers. Variables are just like the containers where we store the values. Okay. So values can be anything. Values can be like integers. So that category we give with this particular thing, data type. So first cover this, then we'll cover to the tab. We'll come to this data type part. So this variable thing is just like a box. Okay, it is just like a box which is storing something. Okay, it may be a text. Okay, it may be a text. It is storing. Okay, in computers or in any digital machines, there is a memory thing. Okay, there is a term which is memory. Okay, so just like आपका phone, आप smartphones use करते हो, whenever we are taking any pictures or videos, it takes space. ठीक है, same goes for text or numbers or whatever you are writing, it takes space. ठीक है, same goes for this line also, it is taking a space, a bit of memory space, that uh, that heap memory. ठीक है, so that is again a behind the scene concept, we don't have to go inside that, but there is two memories which is divided, stack and heap, where we are storing the variables, where we are storing the functions. Okay, everything takes space. Same goes for this programming language, Python or maybe any language. So here we have, let's suppose if you are storing numbers, okay, just like I'll show you. So text, numbers, whatever you are storing, even functions, it takes space. Okay. So we will not be covering this function in the variable. Variable जो है आपका is just like a name जो कुछ store करता है. Function is a different thing. ठीक है, just like a variable. वो एक परफॉर्म एक कोड को एग्जीक्यूट करता है फंक्शन. ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा, उसको अपने फंक्शन कॉल से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, so that is a different thing. But in variables are like a box. Consider this as a box, और ये box कुछ store कर रहा है. Let's suppose if I give a simple example, this is, let's suppose 12 is written in here. ठीक है, so this is actually taking a space. Okay, what we call it as memory disk. ठीक है, the memory address as such inside, right? So this memory which is let's suppose इसको हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया इस variable को. So variable is just like the name for anything. ठीक है, whatever you are storing, right? So in general हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं टू स्टोर एनीथिंग, जस्ट लाइक अ बॉक्स.
and let me, okay, just like a container, just like a box. Okay. Then we have constants. Okay, we'll come to this constants later. Then there is a data type. Can anyone tell me what is a data type? Okay, I'll be covering this again with the code. Don't worry. What is a data type? Data type क्या होता है in any language? In programming language, basically. What are the data types? See, I don't want the actual data types. Just the brief idea. कि होता क्या है data types? I mean, why we are using this term data type in programming language? Anyone have any idea what the data types? Which type of data to have stored in the exactly. So the type of data. See, in the programming language, we cannot store the numbers. We cannot store the string into the same variable. ठीक है, मतलब एक डाटा टाइप ही नहीं होगा, या लेट्स सपोज एक वेरिएबल सब कुछ स्टोर नहीं कर सकता. ठीक है, दैट फर्स्ट थिंग इज दैट वेरिएबल शुड हैव अ डाटा टाइप. ठीक है, द बेसिक थिंग. For integer we use int, so int is a data type exactly. So int is a data type. Data type is, in simple words, what we can say is कि the type of data to be stored, right? Or used. ठीक है, ये कंटेनर्स हम लोग जब यूज करेंगे तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज दिस डाटा टाइप, राइट? सिंपल. सो डाटा टाइप का मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज कि लेट्स सपोज, एक I'll just give a simple idea कि for them who don't like understand this particular meaning, like we have vehicles, ठीक है, that automobiles we say. So we have the category of the cars, bikes, ठीक है, or maybe buses, trains and like that. So I'll just take two, cars and bikes. ठीक है, so both are different thing. Car have like four tires, bike have two, maybe like there's some changes. We have like three tires in car. Let's ignore the exceptions. Normally we have four tires in car like that, and we have bikes, the motorbikes. ठीक है, तो हम लोग जब भी कुछ डिनोट करते हैं किसी को, तो वी कैन नॉट से कि बाइक आपका एक लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन कि आपका कार जो है बाइक कन्वर्ट हो जा रहा है लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नॉर्मल अगर रखें तो बाइक एक अलग कैटेगरी में आएगा. ठीक है, कार इज अ डिफरेंट थिंग. तो दैट पर्टिकुलर नेम वी आर गिविंग, दैट इज अ वेरिएबल कार एंड बाइक. ठीक है, अब उसका जो बिहेवियर है, जस्ट लाइक डाटा टाइप का एक काइंड ऑफ बिहेवियर है. नंबर्स, सबको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, लाइक -1 -2, 0.5. ठीक है, तो उसमें भी कैटेगरी है. इन जनरल, लेट्स सपोज इफ यू हैव डाटा टाइप ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो नंबर आपका एक डाटा टाइप है. देन सेम गोस फॉर अल्फाबेट्स एंड स्ट्रिंग. ठीक है, उसमें भी डाटा टाइप डिवाइडेड है. वी हैव कैरेक्टर्स, वी हैव स्ट्रिंग्स. ठीक है, विल सी ऑल दोस थिंग्स. सो डाटा टाइप इज जस्ट लाइक द टाइप ऑफ पर्टिकुलर थिंग वी आर सीइंग राइट नाउ. ठीक है, जैसे कि नंबर हम लोग देखते हैं, दैट इज अ डिफरेंट डाटा टाइप. इंटीजर, ठीक है, इन इंटीजर ऑल्सो वी हैव फ्लोट, डेसिमल्स, डबल. ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं. मेनली क्या होगा कि जैसे आप समझो, इन जनरल नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डोंट एल्स. ठीक है, वी कैन नॉट स्टोर इमेजेस डायरेक्टली इन द कोड. ठीक है, इमेज को अपलोड करने का ऐसा कोड से क्रिएट करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू बाइट्स. ठीक है, वो बाइट में कन्वर्ट होता है. तो बाइट इज ऑल्सो डाटा टाइप. कि अगर किसी ने कभी ध्यान दिया हो, कभी सोचा हो कि इमेज भी हम लोग स्टोर करते हैं ना, जैसे आप कभी फाइल अपलोड करते हो, दैट इज ऑल्सो बीइंग स्टोर्ड इन समवेयर इन द कोड. ठीक है, वो कोड में डायरेक्ट ऐसा इमेज फॉर्म में नहीं सेव हो जाता. या तो वो ब्लॉब डाटा सेव होता है, या तो बाइट में सेव होता है. सो बाइट इज ऑल्सो डाटा टाइप. बाइट मतलब कि एक छोटा यूनिट ऑफ डाटा, राइट? बाइट, बिट्स, लाइक जैसा होता है ना नॉर्मली आपका 64 GB का स्टोरेज है, तो सेम उससे छोटा यूनिट होता है आपका किलो बाइट. देन अगेन वी हैव बाइट. this I'm talking about. So this byte is also a data type, जिसको लेट्स सपोज अगर आप कोई को इमेज में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. वो कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, डायरेक्ट नहीं इमेज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कोड में. इन द कोड ऑल्सो वी कैन स्टोर इमेजेस बाई दिस फॉर्म, द बाइट डाटा टाइप. ठीक है, नाउ जस्ट लाइक नंबर्स वी हैव स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन अभी देख लेते हैं. इन जनरल डाटा टाइप का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, द टाइप ऑफ डाटा वी वांट टू स्टोर और यूज. ठीक है, तो द बेसिक थिंग वी शुड नो इज, वी शुड अंडरस्टैंड कि that variable in Python doesn't need to specify the data type, but in C language it is not like this. ठीक है, this is the syntax we are talking about. ठीक है, तो यहाँ पे Python में क्या होता है, Python में we don't need to specify string, we don't need to specify numbers, but type होता है यहाँ पे भी.
Okay, there is a misconception among like few people कि we don't have such data types in Python, but there is a data type. Obviously, we don't declare like this int and like this, but there is a data type. ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे निकालते हैं, नॉर्मली कैसे स्टोर होता है, जैसे आपने लैंग्वेज देखा होगा. तो आई जस्ट आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वेरिएबल्स मतलब एक कंटेनर है. लेट्स सपोज बॉक्स जहाँ पे आप लेट्स सपोज यू आर स्टोरिंग एप्पल्स, ठीक है, वो मैंगोज फोर एप्पल्स लाइक दिस. सो दैट नंबर और समथिंग इज स्टोर इन दैट बॉक्स. ठीक है, सेम हियर इन द कोडिंग लैंग्वेज, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव वेरिएबल्स राइट लाइक दैट. तो ठीक है, तो वही क्लासिफाई होता है डाटा टाइप्स के थ्रू कि वेरिएबल कौन सा डाटा टाइप स्टोर करता है. बट इन पाइथन वी डोंट हैव समथिंग लाइक दैट. ठीक है, स्टिल वी हैव डाटा टाइप कि कौन सा डाटा है, वो इंटीजर है, नंबर है, स्ट्रिंग है, अल्फाबेट्स है. बट पाइथन में वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई लाइक दैट, लाइक इंट. ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं लिखते इसमें इंट ए ये समथिंग लाइक दिस. वी डोंट राइट लाइक दिस, वी सिंपली राइट a equals to 12. सिंपल. ठीक है, so I'll show you this. I'll show you obviously कि कैसे काम कर रहा है वो. So that's the data type we were talking about. So data type, I hope this thing is clear. Then there is a constant. Constant का किसी को idea have anyone have used constant in C language or in Java? जो भी language आपने पढ़ी है. Anyone have any idea Fixed about the values like constants? numbers. Exactly. So we have the fixed values like numbers. It might be strings. ठीक है, जो हम लोग starting code के starting में define करते हैं. ठीक है, so this constants I'll write in here again. तो भी एक अच्छा एग्जांपल कांस्टेंट का होगा पाई, right? The 22/7 or 3.141. In maths, we have this pi, right, which is mostly used in performing the arithmetic operations or any calculations in algebra. ठीक है, so constants is just like the fixed values. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो चेंज नहीं होगी. ठीक है, और the ऐसा कह सकते हो फिक्स्ड वैल्यूज. द एग्जांपल वुड बी दिस pi. ठीक है, I don't think so I have a symbol directly, but this is the value of pi. ठीक है, like this. So this is a constant. ठीक है, which we define. So this is not a variable. Constant is a different thing. जो वैल्यू चेंज नहीं करता. वेरिएबल में क्या होता है कि आप वो बॉक्स में ले, सपोज ऐसा सिंपल एग्जांपल देखो, बॉक्स में आप ऑब्वियसली 4 एप्पल्स हैं, आप एप्पल्स को निकाल के उसमें मैंगोज रख सकते हो. सिंपल. सेम गोस फॉर द वेरिएबल्स. इफ आई हैव स्टोर्ड 12, आई कैन रिमूव दिस 12 and I can store 13 or 14, और लेट्स सपोज आई कैन स्टोर इन पाइथन. इट इज पॉसिबल. मैं इस पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, जो कि इन नॉर्मल लैंग्वेजेस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता और लैंग्वेजेस में, बिकॉज वो डाटा टाइप की वजह से. बिकॉज एक वेरिएबल स्पेसिफिक डाटा टाइप का होता है. ठीक है, so if you have learned, it might create a little bit of confusion कि ये कैसी चीज हो रही है. But Python is just like that. That is the syntax for the Python. ठीक है, I'll show you with example. So with the examples, I'll be covering each and everything. ठीक है, अभी मैंने I've just given the brief idea. So variable is just like that in any language, in Python also. So it is like a container जहाँ पे हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. Even if 15 is stored in a variable, तो इसको हटा के I can store this hello. Okay, so this is a string or like characters, the flow of characters. So I can store hello in this container. Okay, so I can store the text, I can store the numbers, I can store the symbol. Symbol is also considered as string. Character ही consider होता है वो. There is no specific data type for that. So just like this. Okay, so we use few things, few operators we have to understand. So there is one more thing you have to know. चलो वो बाद में देख लेंगे अभी साथ में. ठीक है, तो statements का ये होता है statement. Whatever it is just like a statement, this is also a statement. ठीक है, more often this is called as expression. ठीक है, because ये statement लिखा है to run it. ठीक है, कुछ चीजें को परफॉर्म करने के लिए लिखा है कि प्रिंट करेगा. दिस इज अ स्टेटमेंट. नाउ दिस a equals to 12 जो है, दिस इज अ एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन I'll write like this. ठीक है, so this is नहीं करना है इसको. Okay, so now this is a expression. Expression means like the logical thing. Okay, we can say the logical part of the code is called as expression, where whenever we are using this equal to, whenever we are using the less than, greater than, that is called as expression. जो calculate होता है, जो perform होता है. ठीक है, so that particular thing, that is a difference. ठीक है, बहुत we don't have to like go deep dive into this part. Simple thing. Okay, normally we have code whatever written. Generally you don't have to worry about the statement and expression. Everything is combined. ठीक है, but for the fundamental we should know कि क्या चीजें होती हैं. तो एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक दिस. अब स्टेटमेंट मतलब कि प्रिंट लिखा हुआ है, मैथ डॉट फ्लोट लिखा है, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू लिखा है, जो हम लोग पावर के लिए देख रहे थे. दैट इज अ एक्सप्रेशन. ठीक है, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट. वो परफॉर्म कर रहा है कुछ चीज. 2 के पावर n होगा, तो n की जो भी वैल्यू आएगी इट विल परफॉर्म दैट 2 times n. ठीक है, सो दैट इज अ एक्सप्रेशन विच इज रिटन. दैट इज अ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो जो भी मैथमेटिकल चीज लिखी है, जो लॉजिकल लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन.
स्टेटमेंट ऐसा हो गया सिंपल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अबाउट द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ नेम, जैसे मेरा नेम है, ठीक है। लेट्स सपोज बाइक को बाइक हम लोग बोल रहे हैं, मे बी देयर इज सुजुकी, वी हैव कावासाकी, लाइक दैट, ठीक है। दैट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, कि उस पे क्या फीचर्स होंगे उसके, दैट इज डिनोटेड बाय दैट नेम, ठीक है। जस्ट लाइक आइडेंटिटी, जो भी कोई आप स्टोर करते हो उसका आइडेंटिटी है, उस मेमोरी एड्रेस का एक आइडेंटिटी है। बिकॉज डायरेक्टली हम लोग मेमोरी एड्रेस में स्टोर तो करेंगे, बट मेमोरी एड्रेस एक्चुअली एक नंबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। So there is a specific reason why we're using a variable name, not we're directly using the memory address. We're not directly fetching the memory address, वहां से variable निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। Because human readable format में we are using the variables, ठीक है। मतलब जो easy हो अपने को understand करने में। Let's suppose if I just say num, ठीक है, और I can just say number also. In simple you can say just n equals to 12, just like this, ठीक है। So this n is a variable, simple, ठीक है। मैथ्स अगर थोड़ा बहुत भी करा होगा तो वैसा सिंपल सा ही चीज है। तो वेरिएबल्स वी कैन स्टोर नंबर्स, वी कैन स्टोर स्ट्रिंग्स, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट इज अ स्ट्रिंग। डाटा टाइप पे बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं ये। सो देयर इज ऑपरेटर वी आर यूजिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? ऑपरेटर्स आल्सो वी हैव टू लर्न, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वी विल सी एवरीथिंग, ओके। मीनवाइल, so can anyone tell me what is this equal to? Is this a there is a Assignment difference? operator. It's assignment Exactly. So operator. this is the assignment operator, right? So this is the assignment operator, because we are not comparing anything, ठीक है। इन जनरल ये आपका कंपैरिजन वाला होगा, वैसे मैथ्स में भी वी हैव द सेम थिंग, ठीक है। कंपैरिजन वहां पे भी हम लोग डबल इक्वल टू लगा के करते हैं नॉर्मली, बट दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर व्हिच मींस एग्जैक्टली, सो इट इज टू असाइन द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल मतलब ये है कि 12 एक वैल्यू है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ डाटा है, ऑब्वियसली 12 इज अ डाटा, ठीक है। सो जैसे ही आपका, तो ये सब चीजें हैं डाटा के फॉर्मेट में आती हैं, जिसको आप करके चेंज करके यू आर मैनिपुलेटिंग दैट डाटा, और फिर वो लॉजिक लगा के चेंज होता है और आउटपुट मिलता है अपने को, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक हाउ वी लर्न, और फिर वो चीजें बनती हैं उससे, एप्स और वेबसाइट, ठीक है। सिमिलरली, सो यू हैव दिस n व्हिच इज अ वेरिएबल स्टोरिंग 12, दिस इज अ डाटा, ठीक है। लेट्स सपोज किसी की एज है, जो भी है, तो ये डाटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आई कैन हैव दिस, लेट्स सपोज नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, क्या ऐसा कुछ, वी हैव टू यूज डबल कोट्स, not double quotes actually, here the single quotes will work fine, okay. So this assignment operator, I will tell you here as well. Assignment operator, this is the example for the assignment operator, equals to, right? This is the assignment operator, which means this seems like ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसा नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि n में 12 की वैल्यू स्टोर हो गई, सिंपल, जस्ट लाइक अ सिंपल मैथ्स, और नेम के अंदर में ये स्टोर हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोगों ने असाइन कर दिया 12 को n के लिए, नेम में ये, ठीक है। ऑल दो we can simply print 12 also, but if we have to store and then print, we can use like this, okay, n comma then we have this name, okay। So name की बात लो, एक n, so variable could be anything except the keywords, आप keywords को नहीं रख सकते, ठीक है। just like there is a specific convention, so that few keywords we cannot directly use as a variable name, ठीक है। just like the other language, let's suppose आप main देखा होगा आपने, in C language और in Java language we cannot use this main, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, अगर आप मेन फंक्शन बनाया होगा इसमें पाइथन में, तो आप इसको नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो नॉर्मली वी अवॉइड द कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स में भी एक चीजें होती हैं, कीवर्ड भी, दिस इज अगेन अ फंडामेंटल। तो देखो कुछ कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं, आई विल जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ, सॉरी, ओके। सो देयर इज वन मोर thing which is important, that is the keyword, right? So keywords are the specific words, मतलब कि जो फिक्स वर्ड्स हैं, जैसे मेन हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। सो एवरीथिंग इज, दिस इज अ कीवर्ड इन पाइथन, जस्ट लाइक जो भी अदर लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट होता है, प्रिंट एफ होता है, ठीक है। हियर वी हैव प्रिंट, so this is a very this is a keyword, ठीक है। this everything is a variable thing, ठीक है। this is everything is variable, main is also a keyword, ठीक है। इन पाइथन और मोस्टली इन ऑल द लैंग्वेजेस मेन इज अ कीवर्ड। तो कीवर्ड्स आर लाइक द फिक्स वर्ड्स, जो कि प्री डिफाइंड है, जैसे कि जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं, जैसे लाइक इन एनी लैंग्वेज और एनी बुक, आप जैसे सपोज कुछ भी केमिकल्स लिखे हैं, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, सो फिक्स चीजें हैं वो, ठीक है। पहले से जो चीजें आ रही हैं वही हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं,
ठीक है, we're not changing the names by ourselves, obviously, right? Same goes for the coding language. So we're not changing the names, those are the keywords जो fixed words हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी हम लोग यूज करेंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज करा था DEF, ठीक है, we'll understand what is this. So let's suppose कि add number के लिए, so this DEF is also a keyword, not this add number. This is a function name. So it is human defined name. ये हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से. ये नेम भी मैं अपने से दे सकता हूँ. Whatever you want to give, you can give it age, you can give it n, ठीक है, you can give it anything. So this is a variable name which we can define, but there is a rule. We cannot use the keywords as a variable name, ठीक है. Generally we don't follow that often. मतलब हम लोग keywords को नहीं रख सकते variable name में, ठीक है. Same goes for the constants. कुछ कुछ फिक्स चीजें होती हैं, जैसे ये चेंज नहीं होता. दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है. हम लोग सी लैंग्वेज में, या सी लैंग्वेज में आई गेस वी यूज void लाइक दिस, आई गेस ऐसे हम लोग उसमें करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है. सो दिस इज द सेकंड लाइन इज फॉर द सी लैंग्वेज. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द फंक्शन. हियर वी हैव टू यूज df कीवर्ड. सो दिस void इज आल्सो अ कीवर्ड. ये कीवर्ड नहीं है अगेन. तो देखो कुछ कुछ चीजें हैं, जस्ट लाइक दिस इज अ सिंटेक्स. तो इस सिंटेक्स में ये कीवर्ड है, दिस इज अ फंक्शन नेम, और ये ब्रैकेट्स हैं फॉर द आर्गुमेंट्स, ठीक है. तो विल सी दिस इज द फंक्शन पार्ट, so we'll be doing it afterwards. अभी के लिए वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स खत्म करते हैं, ठीक है. तो that's what you're talking about here. वेरिएबल नेम could be anything, but make sure कि आप कीवर्ड्स को मत रखो. कीवर्ड्स अगेन सिंपल चीज है, जो जो फिक्स कीवर्ड्स होंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ. देखो there is like lot of list, ठीक है, I can show. तो जो फिक्स कीवर्ड्स हैं ये बहुत सारे हैं. तो maybe I could miss, so I can simply check from web. Okay, so there are like few keywords like this. ठीक है, this is like a simple list. Again, this is not complete, but we have few lists. तो ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, जनरली वी अवॉइड देम टू यूज अ वेरिएबल नेम, ठीक है. फॉर देम हु डोंट अंडरस्टैंड, जो उनको लॉजिक पहले स्टार्टिंग नहीं पता है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि वेरिएबल नेम में वी कैन नॉट यूज दिस नेम. दिस आर द की, ठीक है. जैसे कि एक हम लोगों ने यूज करा होगा इसमें से, विल बी यूजिंग फॉर. वी हैव यूज्ड व्हाइल, वी हैव यूज्ड इन द लास्ट क्लास, ठीक है. विल अंडरस्टैंड व्हाइल इज अ लूप. Then for the condition we have if, elif. Elif is the else if in C. Here it is the different. So this break statement, except, else, await, false. This all are the keywords. ठीक है, true, false are the boolean values. So just like this, these are the keywords. We generally avoid them to use as a variable name. ठीक है, तो हम लोग variable में ये यूज नहीं करते हैं, like for ऐसे, ठीक है. ये नहीं कर सकते because ये error देगा इसमें. It will say प्रॉब्लम देखो आप यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ठीक है, बट इट इज यूजिंग दिस फॉर. जैसे कीवर्ड डिफाइंड है, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे आप फॉर आई इन रेंज करके लिखो, जैसा कि उसमें होता है पाइथन में, ठीक है. तो दिस इज सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप. तो ये चाहेगा कुछ ऐसा लिखो आप, बट यू आर राइटिंग फॉर इक्वल्स टू 12, ठीक है. फॉर इज जस्ट अ नेम, बट दिस इज अ कीवर्ड, सो वी कैन नॉट यूज फॉर, राइट. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. दिस वर्क्स फॉर द एवरी लैंग्वेज. ये जो रूल है, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल द लैंग्वेज. कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो वी कैन यूज लाइक दिस, ठीक है. तो ये चीजें हो जाती हैं, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वी डोंट रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट कीवर्ड, बट जब भी कुछ लिखते हैं और एरर मिलता है, तो हम लोग समझ जाते हैं दैट माइट बी अ कीवर्ड, सो वी शुड यूज एनी अदर वेरिएबल नेम, ठीक है. तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रखो, बस उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए. लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग, वो एक नेम स्टोर कर रहा है, तो हैव गिवन दिस नेम. यू कैन जस्ट राइट इट लाइक फर्स्ट नेम और फुल नेम, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है. सो देयर इज नो रूल फॉर दैट. देयर इज वन थिंग कि नॉर्मली हम लोग स्पेस नहीं दे रहे होते हैं वेरिएबल नेम्स में, वी यूज अंडरस्कोर्स, ठीक है. तो देयर आर फ्यू रूल्स, विल बी लर्निंग, और हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे वो चीजें, कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, रूल्स होते हैं फॉर द वेरिएबल नेम आल्सो. हम लोग अंडरस्कोर लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज स्पेस, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं. दिस इज अ एरर, दिस इज अ सिंटैक्स एरर. ये न्यू लाइन से सेपरेट हो सकता है, या सेमीकोलन से, या तो फिर अंडरस्कोर लगा के इसको लिखना पड़ेगा. तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है. फुल नेम स्पेस होके नहीं चलेगा. सो दैट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर और वैलिड वेरिएबल नेम. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो ऐसे ही कुछ कुछ रूल्स और हैं. आई विल जस्ट राइट इट आफ्टर दिस क्लास एंड प्रोवाइड यू, ठीक है. जो कोड में लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे, जो चीजें आएंगी बीच में, ठीक है. तो लेट्स रिमूव दिस फंक्शन. So this part is clear. This is the expression which is written. This is the statement. ये statement क्या कह रहा है कि आप print कर दो name और age को, ठीक है. We don't have name, so we have full name. We should print full name, ठीक है. So now this would work fine.
Now let's come to this part, what we have left. So yeah, in Python there is interesting thing. Okay, I don't think so this works on the C or any in JavaScript it works actually. Okay, so this is the basic thing everyone knows about this. Can anyone tell me can I use like this? Just tell me. Okay, जो आपको idea लग रहा है मुझको पढ़ रखा है आपने. तो अभी I hope this is clear. Anyone have any doubt in this? I hope this is clear. This is easy. यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि आप कुछ भी यूज कर सकते हो. This can store a number. I'll come to the edge cases कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं. ठीक है. I hope this is clear, right? So let's suppose if I do something like this, a comma, this is now where the Python, then the magic of this Python comes. Okay, so if I do like 12 comma 14 comma like this, so can anyone tell me is it a syntax error? ये syntax error है क्या यहाँ पे? Like is this possible? Is this possible? Can anyone tell me? Just speak it. Is this correct? This line number 5. Is this correct? No, right? Obviously no. Right? Anyone else? Anyone else? Those who are here. I hope you are guys able to get my point. Is this clear? I mean, is this correct? Is this correct? One we got is no, right? So said no, this is not correct. Okay, so I mean, just for the others also, can you tell me is this line correct? ये जो लिखा है मैंने, is this correct? Is this correct? Is this the proper way to write? No, obviously. ठीक है, but in Python, this is again the Python where the Python comes. ठीक है, so Python is a modern language. Here, there lot of changes they have done. ठीक है, as compared to C and Java. Java में जो चीजें possible नहीं है, C में possible नहीं है, but it is quite possible in Python. So this is the term which is the thing maybe you haven't gone through. This is the multiple assignment. ठीक है, and the same line. So we call it multiple assignment. ठीक है, in Python. So this is only applicable for the Python. This is correct. ठीक है, there is no there will not be any compile error. ठीक है, ये कुछ compile error नहीं देगा. Let's suppose if I am just printing A, comma B, comma C. ठीक है, so there is again this is quite simple कि print के अंदर में क्या करते हैं I'll tell you. Print के अंदर में हम लोग variable नहीं भेजते हैं. Either you can pass the function call also if it returns something, and we can pass by comma separation. मतलब कि आपके 3 वेरिएबल हैं, ऐसे भी अलग अलग वेरिएबल डिफाइंड है, तो उसको भी हम लोग ऐसे कॉमा सेपरेट भेज सकते हैं. पहले फुल नेम को प्रिंट करो, देन प्रिंट द एज. सिंपल. ठीक है, सो दैट ऑल्सो वी डू लाइक दिस एज वेल. यहाँ मतलब होता है कि आप फुल नेम प्रिंट कर दो, देन उसके बाद एज प्रिंट कर दो सेम ऑर्डर में. ठीक है, तो सीक्वेंस वुड बी सेम. पहले आपका जॉन विक प्रिंट होगा, देन 12. राइट, कोई सेपरेशन नहीं होगा, देयर नॉट बी एनी स्पेस, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा उसको. देन वी हैव दिस ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, तो जैसा यहाँ लिखा था वैसे मैंने प्रिंट भी कर दिया उसको. तो now you'll see this is not error, this is not error, you'll see. So here एक मैं clear करता हूँ एक बार. ठीक है, now you'll see. So there is John Wick 12 which is coming from line number 9. ये print से चल रहा है John Wick 12. ठीक है, then there is 12 14 hello. ठीक है, ये हम लोग अलग लाइन में प्रिंट कर सकते हैं. There is no hard rule, fast rule for this. You can do like this as well. You can say B, you can say here C as well. ठीक है, so we can print in different lines. Sorry, what just happened? Yeah. Okay. So it will print in a different type. ठीक है, just like a printf, we have a println in Java. तो जो लाइन चेंज करता है ना प्रिंट स्टेटमेंट का, here we can do like this. ठीक है, तो अगर लाइन में प्रिंट करना, so this is totally correct. This is a different topic in Python, quite a different feature. मल्टीपल असाइनमेंट, एक लाइन में हम लोग कॉमा सेपरेट करके, बट एक चीज ध्यान देना है कि मल्टीपल असाइनमेंट में वी शुड हैव दिस लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के इधर वाला, ये वेरिएबल नंबर सेम होने चाहिए और इधर भी सेम होना चाहिए. और जो पहला है वो इधर का पहला वेरिएबल विल बी टेकन. लाइक होगा क्या इसका, ये कि a इक्वल्स टू 12 लिखा है मैंने, b इक्वल्स टू 14 लिखा है. ठीक है, एंड c इक्वल्स टू हेलो लिखा हुआ है. I'll come to this double single quotes and double quotes. Don't worry, वो मैं डाटा टाइप पे आऊंगा अभी. I'm just explaining the multiple assignment and assignments. ठीक है, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, तो दिस इज द लाइन विच वाज रिटन इन अ सिंगल. ठीक है, तो कोड को रिड्यूस करने का पार्ट होता है पाइथन. आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस कि हम लोग एक लाइन में हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, बट इन सी लैंग्वेज, इन जावा लैंग्वेज इट इज नॉट पॉसिबल. वी हैव टू राइट मेन, वी हैव टू राइट
प्रिंट एफ एंड दिस परसेंट डी एंड ऑल जो भी रहता है उसमें, ठीक है, तो वो चीजें नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, बट इन पाइथन वो रिड्यूस कर देता है सब कुछ, ठीक है, इट डजंट डिपेंड ऑन डिफ फंक्शन मेन, ठीक है, यहाँ पे वो चीजें नहीं होती, वैसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही होती क्लास ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है, वी हैव क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बट इन पाइथन इट डजंट वर्क लाइक दैट, तो पाइथन का सिंटेक्स थोड़ा अलग है, ठीक है, सेम गोस फॉर दिस, तो ऐसा लाइन चेंज करके लिखने से अच्छा, मतलब सेम है, मीनिंग इज टोटली सेम, बट ऐसा लिखा होता है पाइथन, ठीक है, टू रिड्यूस द कोड लाइन, दैट्स इट, ठीक है, तो डेवलपर्स जब भी राइट करते हैं दे आर फॉलोइंग दिस रूल, ऐसा कुछ, अगर वेरिएबल नेम ऐसे डिफाइंड है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर रहे होते, इसको हम लोग, अच्छा बताओ मेरे को ये चेंज करके बता दो भी, like if I have to write age equals to 12 full name like this in a single line, what I can do, मल्टीपल असाइनमेंट के साथ कैसे होगा, कैन एनीवन टेल मी फॉर दिस, मैं इसको भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो जस्ट लेट मी नो कि हम लोग सिंगल लाइन में इसको कैसे कर सकते हैं, लाइक वी कॉल इट अ मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन, कॉमा सेपरेट करके, बट मेक श्योर कि जो पैरामीटर्स, जो भी नंबर आपके वेरिएबल नेम के लेफ्ट साइड में है, सेम शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, एकदम मैच करेगा, a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 14, उसके ऑर्डर पे मैच करेगा, और वो वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो जाएगा उस वेरिएबल में, ठीक है, अगेन देयर इज नो रूल कि आप यहाँ पे नंबर ही कर रहे हो तो नंबर ही लिखाएगा, वी कैन स्टोर स्ट्रिंग ऑल्सो फॉर द अदर वेरिएबल, तो एग्जैक्टली, सो एज कॉमा फुल नेम इज 12 कॉमा सचिन, मेक श्योर कि आपने एज अगर पहले लिखा है तो आप नंबर को, ठीक है, जस्ट दैट सचिन इज रिटन, दिस इज टोटली करेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ, राइट, सो दैट इज द मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन, ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द सी लैंग्वेज बट क्वाइट यूजफुल, राइट, so now I hope this is clear, anyone have any doubt in this, ठीक है, because this you'll be seeing lot in code, ठीक है, ये बहुत दिख रहा होगा आपको ऐसा, normally we avoid like this, we try to use like this, ठीक है, एक लाइन में लिख देते हैं सारा कुछ, अगर एक जैसा एक लाइन पे लिखा हुआ है ये ऐसे दो लाइन में सेम टाइम पे, तो we try to use like this, ठीक है, again it's up to you, if you want to use follow this one you can follow, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही लिखो ऐसा, right, but this is there so you should learn this, so I hope this is clear, anyone have any doubt, just let me know, कोई डाउट है जल्दी से बता दो, then we'll move to the data types and we can come to this for loops and while loop also, ठीक है, just let me know, do we have any other doubts in here, do we have doubt, do you have any doubt, okay, is this clear, yeah, okay, great, ठीक है, so let's directly move to the data types, again मैंने जैसे बताया कि पाइथन में we don't have to specify, आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, ठीक है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे मैंने एज में 12 रखा हुआ है, एज में मैं नहीं भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है, कोई रूल नहीं होता यहाँ पे ऐसा कुछ करने का, लाइक दिस, यहाँ पे मैं नेम या लेट्स सपोज कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ उसमें, ठीक है, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, I'm just using the same example again and again, but this text also I can store, ठीक है, एज तो आपका नंबर स्टोर कर रहा है वो सेम ये भी स्टोर कर सकता है, पाइथन इज टू मच डायनेमिक, ठीक है, तो एक फीचर जो आई गेस में भी कल मिस हो गया होगा, वो आपका एक तो है कि पाइथन जो है ना बहुत डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस कि वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग, ठीक है, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, इन टर्म्स सिंटेक्स, जैसे आपने देखो वेरिएबल नेम लिखा, हम लोगों ने लिखा क्या, इंट लिखा, कुछ स्ट्रिंग लिखा, कुछ नहीं लिखा ऐसा, ठीक है, दोज हु ऑलरेडी नो, बट जो जिनको नहीं पता उनके लिए तो और इजी है वो, ठीक है, बट दोज हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू कोडिंग वंस, मे बी इन सी लैंग्वेज और जावा, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक है, इवन व्हेन आई हैव स्टार्टेड अराउंड 5 years ago for learning python it was confusing for me as well, but I understand that part, but those who don't know उनके लिए उतना कुछ खास नहीं लगेगा, like they'll not be confused because उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोड, ठीक है, so for them it will be like a simple thing कि हम लोग एज वेरिएबल में वी आर स्टोरिंग अ नंबर, आफ्टरवर्ड्स एज में हम लोग ये स्टोर कर दिए, ठीक है, बट दिस इज क्वाइट काइंड ऑफ एक्सेप्शन एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग सी लैंग्वेज में, अगर आपने इसको इंट एज रखा हुआ है ऐसा कुछ जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंट नहीं लिखते हैं, देयर इज अ डाटा टाइप इंट इन पाइथन बट हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते उसको, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, उसी एज में मैं ये स्टोर कर सकता हूँ, अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा एज को, लेकिन इसको हटा के मैं प्रिंट करूंगा उसको, ठीक है, तो यू विल सी हेलो वर्ल्ड, जॉन विक हेलो वर्ल्ड, क्योंकि अब अपडेट हो गई है वैल्यू उसकी, ठीक है, ये 12 नहीं रहा उसमें अब, बिकॉज ऑन द लाइन नंबर 3 आई हैव अपडेटेड द वैल्यू ऑफ एज, जो कि एक नंबर स्टोर कर रहा था अब स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली, सो दिस वी डोंट नॉट अप्लीकेबल टू द सी लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता है बट यहाँ पे है, ठीक है, तो लेट्स कम टू द डाटा टाइप्स, ठीक है, so data types we don't have to specify the data types as such, but we have data type obviously in Python, so data type हम लोगों ने देख लिया, data type
I'll just write down the categories. ठीक है, so ठीक है, तो basic ones I'll write, like I'll just say number, and then we have strings, and then we have, okay, so can anyone tell me what do we have next? What should we write afterwards? और क्या हो सकता है इसमें डाटा टाइप्स में? We have numbers, we have strings. Anything else? Are we missing anything in here? कोई और चीजें जो मिस हो रही है इसमें? कोई बता सकता है? I mean, see, for them who are like from biotechnology, I mean, if it's going fast, just let me know. ठीक है, अगर ऐसी कुछ चीजें लग रही होंगी कि if it's going too fast, just let me know. Care. Okay. So directly we don't have this care in Python, but yeah, we can have this. Okay. Care लिख सकते हैं, but जनरली होता नहीं है इसमें, but हाँ एक अलग होता है. String, हाँ string में बता देता हूँ. Strings are like जो, हाँ ठीक है चलते हैं उसपे. और कोई do we have any other, do we have any other data types जो किसी को आइडिया हो डाटा टाइप्स के बारे में? सी डाटा टाइप आप भी कर सकते हो, आप सोच सकते हो इस बारे में. आई मीन अगर थोड़ा बहुत ही मैथ्स का आइडिया है, बहुत बेसिक सा मैथ्स, so you might guess other data types also. Maybe वो एग्जैक्ट नेम नहीं होगा, टेक्निकल नेम, बट you might guess it correct. किसी को कोई आइडिया उसमें डाटा टाइप्स में? सर फ्लोट एक्जैक्टली वो तो नंबर में आ जाएगा. ठीक है, वो मैं क्लासीफाई वही कह रहा था, मैं क्लासीफाई हैव टू क्लासीफाई, वो नंबर के अंदर में ही आ गया. ठीक है, तो ये थोड़ा सिंटेक्स है ना, वो थोड़ा सा अलग है. ठीक है, तो फ्लोट इज ऑल्सो डाटा टाइप, करेक्ट डाटा टाइप, वो बिल्कुल सही है. फ्लोट एक डाटा टाइप ही है. ठीक है, बट इन हियर एक्चुअली एवरीथिंग इज लाइक, यहाँ पे मतलब नंबर्स हम लोग क्लासीफाई करके फिर चेंज कर देते हैं. मैं दिखा देता हूँ उसको. तो देर इज एक ये चीज भूल रहे हैं सब, बुलियन देखा होगा ना, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स टाइप है, वो स्ट्रिंग नहीं है. ठीक है, स्ट्रिंग पे भी मैं आऊंगा क्या चीज होती है. बुलियन इज जस्ट लाइक ये 1 0. ठीक है, और को मत लेना, और मतलब कि एक नेम, या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये जो है ना एक डाटा टाइप है इन पाइथन, इन सी लैंग्वेज ऑल्सो, अगर किसी ने भूल भूल रहे हो आप तो, राइट. सो दिस इज ऑल्सो डाटा टाइप. देन वी हैव वन मोर इन पाइथन विच इज बाइट, जो कि थोड़ा एडवांस है. मतलब जनरली हम लोग यूज नहीं करते बाइट इन नॉर्मल प्रोग्राम्स और नॉर्मल कोड्स. वी आर नॉट यूजिंग दिस, बट इन डाटा एनालिसिस वी यूज बाइट्स ऑल्सो. ठीक है, सो बाइट इज ऑल्सो अ डाटा टाइप. ठीक है, वी हैव बुलियन, वी हैव स्ट्रिंग. नाउ सी, ये नंबर की बात, जो फ्लोट की बात कर रहे हो आप ना, देयर इज अ फ्लोट, देयर इज डबल, सो ये भी क्लासिफाइड होता है दो चीजों में मेनली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हियर वी हैव दिस इंटीजर्स. ठीक है, जिसमें आपके, अच्छा मेरे को कोई बता सकता है इंटीजर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जांपल्स में? लाइक मैं एक लिख देता हूँ 12 14, और क्या क्या हो सकता है नंबर्स में? जस्ट लाइक फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर द इंटीजर्स. Negative numbers. एग्जैक्टली, सो इन नेगेटिव, यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, एंड लाइक ऑब्वियसली वी कैन कवर जीरो आल्सो. ठीक है, तो ऑल दिस नंबर्स, ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे इंटीजर में हम लोग ये नहीं लिख सकते एक 8.9, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इंटीजर नहीं है. ठीक है, लाइक द बेसिक मैथ्स. ठीक है, दिस इज इवन फॉर द बायोपोल ऑल्सो, यू शुड आई शुड नो दिस, राइट. दिस इज द बेसिक पार्ट कि हम लोग 8.9 को वी डोंट कॉल इट इंटीजर, दिस इज अ फ्लोट वैल्यू. ठीक है, तो हम लोग 12 14 -12 रख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे, बट नॉट दिस. उसके लिए क्लासिफिकेशन अलग है, देयर इज फ्लोट. ठीक है, विल बी यूजिंग ईच वन ऑफ दिस डाटा टाइप टू अंडरस्टैंड. तो फ्लोट में आपका भी वैसे वापस से आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव सब 12.3. यहाँ पे हम लोग 12 भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, फ्लोट में कर सकते हैं, बट वो ऐसे स्टोर होता है 12.0 करके, डायरेक्टली 12 स्टोर नहीं होता, वो कन्वर्ट कर देता है उसको. ठीक है, तो विल सी द टाइप कास्टिंग ऑल्सो, कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं. 23.45, ठीक है, -45.6 कुछ भी ऐसा. ठीक है, इसमें भी जीरो आ जाता है आपका, 0.0 कर ऐसा सेव होता है. ठीक है, सो वी हैव फॉर द फ्लोट इज जस्ट लाइक विद अ डेसिमल वैल्यू, सिंपल. ठीक है, एंड फॉर द इंटीजर्स वी हैव, ये तो है ही इंटीजर अपने पास, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम गोस फॉर दिस, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव. राइट, आप यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर भी सेव कर सकते हो, बट वो ऑटोमेटिक उसको 0.0 लगा देगा पीछे. ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल. नाउ इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब मैं बताता हूँ. स्ट्रिंग आपका होता है सिंपल द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो कैरेक्टर्स देखो, कैरेक्टर्स इन नॉर्मली इट इज अ डाटा टाइप अगेन, बट पाइथन में डाटा टाइप थोड़े से कम हो जाते हैं. डाटा टाइप हम लोग स्ट्रिंग और कैर को एक ही बोलते हैं इसमें. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिख लो. कैरेक्टर्स का मतलब भी बता देता हूँ मैं.
So group of characters, or you can say group of characters would be fine. As of string और characters क्या होता है? Character is nothing but the alphabets. ठीक है, तो char जिसको बोलते हैं ना, char is nothing but this A to Z, that A to Z in small letters, और capital A to capital Z, ये भी आपका कैरेक्टर ही है. मतलब A to Z लिखने का मतलब कि A से Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ABCD सारे, सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ. ठीक है, वो कैरेक्टर होता है. उनको जब हम लोग ग्रुप करके वर्ड बना, मतलब अल्फाबेट्स और वर्ड्स सिंपल, तो वर्ड और सेंटेंस को ना हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है, जो आपका लिखा होता है ना सेंटेंस में, जो इंग्लिश में लिखा होता है वैसा सेंटेंस, वो एक स्ट्रिंग होती है. पैराग्राफ हो गई, वो भी स्ट्रिंग हो गई एक. ठीक है, बट एक सिंगल कैरेक्टर मतलब ABCD का, और इसमें ये आपका सिंबल भी आता है. सिंबल मतलब कि जैसा कि 1% हो गया और डॉलर हो गया. सो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर. इससे हम लोग वर्ड तो नहीं बना सकते, बट दिस इज अ कैरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि वी डोंट हैव दिस इन पाइथन, जस्ट फॉर द नॉलेज. सॉरी, यहाँ पे वी डोंट हैव दिस कैर, ये इसी के अंदर कंबाइन हो गया. ठीक है, दैट इज इन द पाइथन. सो स्ट्रिंग के अंदर में ही वो कंसीडर करते हैं, बट कैर इज द थिंग. ठीक है, कैर भी होता है एक चीज. तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते. अगर आपने देखा होगा कोड में, वी कैन नॉट डायरेक्टली, लाइक लेट्स सपोज अगर मैंने ए लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, ए इक्वल्स टू, इफ आई एम राइटिंग नेम इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ. ठीक है, सो आई कैन नॉट राइट लाइक दिस. दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, right? What is wrong here? Can anyone tell me what is wrong in here? This is the, let's suppose this is the code I have written, like simple statement, name equals to, like this. So what is wrong in here? क्या क्या गड़बड़ है इसमें? Upper inverted comma. हाँ, क्या, yes ना, upper inverted, yeah, that is we are missing in here. So in general string हम लोग डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें चल जाती हैं. आपका दोनों चीजें चल जाती हैं, अपर कोट्स और डबल कोट्स दोनों. तो नॉर्मली हम लोग सिंगल कोट से भी कर देते हैं. यहाँ पे सिंगल कोट ही कर देता है VS कोड, वैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा. तो इन सिंगल कोट्स यू हैव टू पास. स्ट्रिंग लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, या सिंगल कैरेक्टर भी लिखना है, लाइक ए भी लिखना है मेरे को, राइट? तो ये भी एक सिंगल कैरेक्टर ऐसे लिखा जाएगा. डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते हम लोग. ठीक है, बिकॉज विदाउट कोट्स दैट इज अ वेरिएबल नेम और अ फंक्शन नेम. ठीक है, देन अगेन वी हैव दिस लिस्ट टपल्स, जो कि थोड़ा एडवांस में, वी विल नॉट कवरिंग दिस टुडे. तो एग्जैक्टली वी हैव लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी, व्हिच इज द मोस्ट यूज्ड डाटा टाइप, सबसे ज्यादा जो यूज होता है. Exactly. So we have this also. Right now I'm just covering the basics. I'm not going for the tuples. But जो normally आता है आपका, ठीक है, जो extra है थोड़ा, ठीक है, तो we have tuple, we have list. तो ये तब cover कर सकते हैं जब we have covered array, right? So array is just like tuple, list, same चीज है. ठीक है, then we have dictionary. ठीक है, तो which is the most important one, और यही यूज होता है. ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो एक छोटे से हैं, लाइक साइड कैरेक्टर्स कह लो, ऐसे हो गए. ठीक है, तो मेन आपका जो भी मेन रोल है ना आपके पूरे पाइथन के मूवी में, मेन रोल प्ले करते हैं टपल लिस्ट डिक्शनरी, और साइड वाले रहते हैं नंबर स्ट्रिंग्स बुलियन. ठीक है, तो इन सबका मिक्सचर यूज होके हम लोग टपल में सेव करते हैं. मतलब टपल एक क्या सेव कर सकता है? लिस्ट ऑफ नंबर सेव कर सकता है, लाइक ग्रुप ऑफ नंबर सेव कर सकता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स, ग्रुप ऑफ बुलियन. सेम गोस फॉर लिस्ट. डिक्शनरी एक होता है, चलो हम लोग देख लेंगे इसको अभी के लिए, समझो. बिकॉज सी वी हैव टू लाइक टेक अ सेपरेट होल क्लास फॉर दिस. एक पूरा सेशन जाएगा इसमें. So I'll be covering this. Yeah, we'll be covering loops. Then we'll come to the tuple, because tuple को access करने के लिए loops के अलावा ठीक है, because tuple एक आपका कई सारा ग्रुप होगा नंबर का. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग लूप कवर करेंगे. That's why we're going in that flow. ठीक है, so I'm not covering those things directly जो बाद में डाउट्स क्रिएट करें उस टाइम पे ही. तो इससे जानने से पहले प्रीरिक्विजिट यही है कि हम लोग को लूप आना चाहिए. ठीक है, तभी आप डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर पाओगे. सिंपल, राइट? So that's why I haven't covered this class. But yeah, we have this data type also. That's correct. So we have, this is the data type which is not there in other languages like Java, C++. JavaScript में होता है और Golang में भी होता है, और भी लैंग्वेजेस हैं. बट C++ उसमें ये सब नहीं होता. वहाँ पे एरे होता है, वहाँ पे हैश मैप होते हैं, मैप्स होते हैं. सी में तो वो भी नहीं है सर. ठीक है, C++ में. सो दिस आर द लाइक डिफरेंट डाटा टाइप्स, और काफी अच्छे डाटा टाइप हैं, सिंपल और प्री डिफाइंड चीजें हैं उसमें. ठीक है, कुछ कुछ मेथड्स हैं उसमें ऑलरेडी. तो दैट इज द थिंग. सो लाइक दिस, ये दिस इज अ रॉन्ग वे. आई वाज सेइंग इन दिस केस ए, या लेट्स सपोज ऐसे लिखना, दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. वी हैव टू यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. ठीक है, तो दोनों चलेगा. ऐसे हम लोग स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर सचिन. लाइक ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, जहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं आपका वो चीज, स्ट्रिंग्स अल्फाबेट से जोड़ के जो बनाते हैं, वहां पे देखो सिर्फ अल्फाबेट नहीं होगा,
सिंबल्स भी आएंगे, जितने भी कीबोर्ड में आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान देना, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चीज देख लेते हैं, आई जस्ट कंफर्म वन मोर थिंग, कि इफ आई एम स्टोरिंग लाइक दिस, a equals to, if I say name equals to, name I guess defined है नहीं है, if I just say name 1 2 3 4 5 6 7 8, is this possible, is this correct? तो इसको मैं क्या कहूंगा, लाइक दिस इज अ नंबर और दिस इज अ व्हाट, ये बता सकता है मेरे को कोई, जो भी हम लोग ने देखा स्ट्रिंग के बारे में कि It's a स्ट्रिंग कैसे string. डिफाइन होता So है। it's a एग्जैक्टली string. दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट, ठीक है। आपने लिख दिया है यहाँ पे, तो कोई एक चीज यहाँ पे हम लोग और ऐड करनी चाहिए, विच इज कि आपके कैरेक्टर्स में सिर्फ ए टू जेड यही नहीं आते, आपके नंबर्स भी इसमें कैरेक्टर्स में कंसीडर होते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो दिस इज अ सिंपल थिंग, जैसे आपका जो नंबर होता है ना, अल्फाबेट, सॉरी द नंबर डिजिट्स वी कॉल, तो ये होता है आपका पूरा कैरेक्टर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट इन कैरेक्टर्स, ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल में, जितने सिंबल्स होते हैं, इस बस दो सिंबल नहीं, सारे के सारे यहाँ पे मैं बस डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड में सारे आते हैं कैरेक्टर में, और वी हैव दिस 0 to 9 ऑल्सो, ठीक है। इट मीन्स कि नेम में आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, और नेम आपका ये भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ये जो नेम है ये आपका नंबर है, चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एज, ठीक है। तो ये एक नेम हो गया, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है। कैसे देखते, कैसे पता कैसे करते हैं, वी हैव अ दैट टाइप कास्ट ऑपरेटर और टाइप फंक्शन टू चेक, ठीक है, टू चेक द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, लाइक दैट। सो ये दोनों डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ये आपका लिखा तो सेम चीज है, लाइक 1 to 8 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 to 8 लिखा है, बट दिस इज अ नंबर, ठीक है, नॉर्मली जो नंबर लिखा होगा, बट दिस इज नॉट अ नंबर। ये जब सिंगल कोट्स में आ गया, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डबल कोट्स, राइट, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, दिस इज क्लियर, सिंपल। सो जब भी सिंगल कोट्स लगा रहेगा तो कुछ भी लिखा हो, नंबर से लिखा हो, बट वो स्ट्रिंग कंसीडर होता है, ठीक है। दिस we can convert into a number. So we'll see that. That is our typecasting in Python or any language. Yeah, right. Yeah, yeah. Okay, great. So okay, so now we left. Okay, so we'll be covering this obviously, right? So we have to cover loops first, and then we'll be going for the tuple in dictionary. Okay, so we're not leaving it behind. I've just skipped it for this day. So आई होप दिस स्ट्रिंग इज क्लियर। स्ट्रिंग मतलब कि उनका ग्रुप करके जब भी कोई सेंटेंस लिख देते हैं या नंबर से कुछ भी जोड़ के सिंगल कोट्स में कर देंगे, सो दैट वुड बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेम में जब भी हम लोग को लिखना होगा, लाइक नॉट फॉर द नेम ओनली, लाइक जब भी आपको स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, तो यू हैव टू यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, दोनों चल जाता है पाइथन। एक्चुअली डबल कोट का वो कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली सिंगल कोट में, तो इसलिए हम लोग सिंगल कोट से लिख देते हैं। नॉर्मली सिंगल कोट से कैरेक्टर को डिफाइन करा जाता था, ठीक है, बट इन द पाइथन द कन्वेंशन इज चेंज। ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग सा है बाकी लैंग्वेज के कंपेरिजन में, सिंटेक्स इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। अगर किसी ने पहले लैंग्वेज पढ़ी होगी कोई, तो उनको इट माइट बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बाद में धीरे धीरे इजी हो जाता है, बहुत इजी है एक्चुअली, ठीक है। एज कम्पेयर टू सी, अगर आप समझ पा रहे होगे तो आपको बहुत चीजें लिखनी नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, मेन में नहीं लिखना पड़ता, कुछ नहीं लिखना पड़ता, जस्ट लाइक दैट। सो वी हैव वन मोर डाटा टाइप, तो ये देखो नंबर्स का हो गया, ठीक है। अब कैसे स्टोर कैसे करते हैं, जैसे एज में आपका स्टोर करना है, लाइक मे बी मेरे को फ्लोट नंबर स्टोर करना है, फ्लोट मीन्स सिंपल, एक डेसिमल नंबर कह सकते हो आप उसको, लाइक 12.23, तो दिस इज अ फ्लोट नंबर, ठीक है। मेरे को बुलियन सेव करना है, सो लेट्स सपोज इफ आई जस्ट से इज करेक्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं ऐसे, तो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे टी कैपिटल होता है, ध्यान देना, टी इज नॉट स्मॉल, ठीक है। तो वन थिंग वी हैव टू नोटिस इन हियर इज कि दिस इज अ वेरिएबल नेम, इट कुड बी एनीथिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज अंडरस्कोर, नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आप ये करेक्ट से सेव करना चाहते हो तो करेक्ट से सेव कर लो, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज फॉर द मूवीज लाइक टोटल स्क्रैच, इफ दे आर लर्निंग फ्रॉम टोटल स्क्रैच, डोंट कंफ्यूज विद दिस पार्ट, दिस इज जस्ट अ नेम, जस्ट लाइक एनी नेम। तो यहाँ पे नेम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, बट नॉट द कीवर्ड्स, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग rules जो आप एक बार को देख लेना, ठीक है, बट इन द क्लास ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग इट, सो आई एम नॉट राइटिंग इट डायरेक्टली, बट आई विल बी गिविंग दोस रूल्स, ठीक है, जो क्या क्या कीवर्ड्स जैसे हैं पूरे आपके, जो आप यूज नहीं कर सकते, याद नहीं करना कुछ, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। कोड में करते करते टाइम यू विल बी सीइंग दैट यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फॉर, तो इट विल बी गिविंग मी एरर, तो ये मेरे को पता है कि दिस इज नॉट करेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सेइंग, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, हियर वी कैन यूज एनी नेम, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दैट विद अंडरस्कोर।
तो कुछ कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है। कैसे देख, जो बेसिक से ये है कि अंडरस्कोर आप बीच में लगा सकते हो विथ नो स्पेस, स्पेस नहीं दे सकते। लास्ट में भी आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हम लोग वी कैन पुट द अंडरस्कोर, ठीक है। तो जनरली अंडरस्कोर ही यूज करते हैं और कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट अ कन्वेंशन, बिकॉज दिस इज द दैट कैमल केस कन्वेंशन वी फॉलो इन जावा, यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर से करते हैं उसको, ठीक है। लाइक फ्यू कन्वेंशंस आर देयर जस्ट लाइक द ग्रामर। तो वेरिएबल नेम में भी कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक वी हैव कवर्ड लाइक दिस स्ट्रिंग बूलियन को भी, आई गेस वी हैव कवर्ड दिस, ठीक है। तो बूलियन में क्या क्या चीजें वैल्यू होती हैं, लाइक इसको ऐसे आप लिख सकते हो रॉन्ग, सो आई एम जस्ट राइटिंग अ वेरिएबल नेम व्हिच फिट्स टू दिस, राइट। सो वी हैव दिस ट्रू एंड फॉल्स, ओनली टू वैल्यूज, ठीक है। वन और जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपको देखना है भी कि क्या वैल्यू किस चीज की, तो दैट वी कैन डू एज वेल। तो लेट्स सपोज इतना तो हो गया इसमें, ठीक है। आई विल शो दैट एज वेल, यहाँ से ये हटाते हैं, ठीक है। लेट्स सी द इनपुट पार्ट, बट इज नॉट दैट मच नेसेसरी, बट लेट्स सी। ये चीजें भी हटा दो यहाँ पे, एंड वी कैन सिंपली से तो योर नेम लाइक दिस, ठीक है। अगेन सी वन मोर थिंग, हियर वी डोंट यूज सेमीकोलंस, सेमीकोलंस इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे सेमीकोलंस यूज नहीं होता, एवरीथिंग इज टोटली अलाइंड विद इंडेंटेशन एंड वाइट स्पेसेस, ठीक है। तो इंडेंटेशन और भी अच्छे से हम लोग देखेंगे जब हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। वाइल लूप और फंक्शन, दैट विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे तो सिंगल लाइन से शुरू हो रहा है, तो इंडेंट एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ऐसे इंडेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। जहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका यहाँ से है एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से, there only everything is going to start, nothing will be starting from in the middle or anything, या बीच में कहीं से भी कुछ नहीं लिख सकता, ये ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कंपाइलर ऐसे ही है, आप जब भी कुछ एंटर करोगे वो वहां से स्टार्ट करेगा, और अगर कोई ब्लॉक स्टार्ट हो रखा है so it will be starting from there। एक यहाँ पे ये चीज नोटिस करने की है, अब द थिंग विच इज नीड टू टेक केयर ऑफ, कि आपका कोड पूरा सही भी होगा, एक इंडेंटेशन गलत होगी, कंपाइलर एरर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली वी नीड वी कैन फिक्स दैट, वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। तो लेट्स सपोज ये चीज होगी, let's take this, let's suppose इंटर का देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत नेसेसरी नहीं है, बट वी हैव दिस इनपुट फंक्शन, ठीक है। वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग राइट नाउ, बट दिस इज अ इनपुट फंक्शन टू टेक द इनपुट, जस्ट लाइक इन सी वी हैव scanf, ठीक है। scanf होता है आई गेस, so we have scanf, राइट। आई गेस ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनपुट में चला जाएगा, राइट। वी डोंट हैव to use this print, here we can write like enter your name, and this will ask for the input from the console, then afterwards you can simply print that name, right? So we can simply print in here this username, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही उसको इनपुट करेंगे और यूजर नेम के साथ लेट्स सपोज एक चीज लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू बी क्लियर कि हम लोग प्रिंट ही कर रहे हैं उसको, माई नेम इज ऐसे, देन कॉमा सेपरेशन, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में, कि सी प्रिंट स्टेटमेंट इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे प्रिंट में हम लोग क्या करते हैं, आइदर यू कैन पास द स्ट्रिंग डायरेक्टली, ये भी मैं पास कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट दिस कॉमा सेपरेशन। तो इट इज सिंपली प्रिंट माई नेम इज, ठीक है, विदाउट द कोट्स। ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग हमेशा विदाउट द कोट से प्रिंट होता है, और उसकी वैल्यू भी विदाउट द कोट ही रहेगी, मतलब हेलो में ये कोट नहीं जाएगा, सिर्फ हेलो लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। मतलब सी के अंदर में जो वैल्यू होगी वो हेलो है, विदाउट द कोट्स। कोट का मतलब ये है कि दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप, तो स्ट्रिंग विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक दैट। तो प्रिंट में माय नेम इज ऐसा हुआ, एंड यहाँ पे यू हैव टू प्रिंट दिस यूजर नेम। तो करना क्या है यहाँ पे, यू हैव टू सिंपली, यू हैव ऑलरेडी सेव्ड द फाइल एंड लेट्स रन दिस, सो इट विल आस्क मी फॉर दिस एंटर योर नेम, और ये रुक गया यहाँ पे, ठीक है। इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग आफ्टरवर्ड्स until you write anything, ठीक है। आई कैन पास नंबर्स, आई कैन पास एनीथिंग, बिकॉज यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड कि ये स्ट्रिंग ही लेगा, बट नॉर्मली नेम लिखा हुआ तो राइट, लेट्स सपोज कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। सो माय नेम इज यस, ऐसा, राइट, सिंपल। सो ये इनपुट के लिए होता है, अगेन दे डोंट यूज इनपुट लाइक दिस डायरेक्टली, बट ठीक है। ये एक फंक्शन होता है यहाँ पे टू टेक द इनपुट, इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। जैसे आपने इंटर करा नेम और ये एज है उसमें इस टाइप से, तो सपोज ऐसा कुछ अगर हम लोग रियल वर्ल्ड कुछ बनाते हैं, तो नॉर्मली कैसे होता है वो जो कोड चल रहा होता है, ठीक, समथिंग लाइक दिस,
input में you can say the enter age. Okay, and let's suppose a fun fact. Input enter your fun fact. ठीक है, लाइक कुछ चीजें हम लोगों ने रखी नॉर्मली, जैसे कुछ भी ऐप बनता है, कुछ बनता है, वी ट्राई टू यूज समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली, सो आपका नेम जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वो वाला नेम भी ले लेंगे, तो क्लियर इट। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐसा कर दिया, और लेट्स सपोज इफ यू वांट टू, नॉर्मली लाइन विल चेंज, एंड यहाँ पे एक लगा दो ऐसा कुछ। ठीक है, एंड उसके बाद में लिख सकते हैं हम लोग लाइक टू लर्न। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे वी कैन जस्ट पास द फन फैक्ट। ठीक है, एज का ऐसा हुआ नहीं जरूरी, बट कोई नहीं। ठीक है, तो एज का कोई रोल नहीं रहेगा उसमें। लेट्स सपोज यहाँ पे नेम पूछ रहा है, सो एंटर योर नेम, आई विल बी जस्ट राइटिंग सचिन। ठीक है, एंड देन मे बी एज, राइट 19, एंड फन फैक्ट, सही सिंगल कोलन मिस हो गया, आई जस्ट राइट लेट्स सपोज पाइथन। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम पाइथन, so it will print like this, my name is Sachin, I like to learn Python। ठीक है, तो ऐसा बना कैसे कि आपने कॉन्कैट कर दिया उसको। कॉन्कैट एक्चुअली दिस इज नॉट अ कॉन्कैटेनेशन राइट नाउ, यू आर सिंपली प्रिंटिंग द स्टेटमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, तो देखो सिंपल सा कोड ही लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ अभी, दिस इज द ओनली कोड व्हिच इज रनिंग। देखो रन ये भी कर रहा है, बट अभी कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो प्रिंट हो जाए, ये स्टिल वैल्यू ले रहा है। एज में आपका यहाँ पे प्रिंट करोगे, सो इट विल स्टिल प्रिंट 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर नेम है आपका, इनपुट लाइक कंपाइलर ने पूछा होगा यूजर नेम एंटर करने को, मतलब आप कुछ भी टाइप करो, देन उसके बाद कीबोर्ड से हिट करो एज, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हियर एज पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नेम भी डाल सकता हूँ उसमें। ठीक है, बिकॉज स्टिल इट विल टेक, बट इन सी लैंग्वेज इट इज नॉट पॉसिबल। एज होगा आपका स्ट्रिंग इन टाइप का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वो नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से कुछ डाटा टाइप का कुछ वो रोल नहीं है, तो यहाँ पे चीजें फंस जाती हैं, यहाँ पे मतलब कुछ कुछ रॉन्ग चीजें पास हो जाती है यूजर से। ठीक है, बिकॉज वी आर द यूजर्स, दिस इज अ लाइक काइंड ऑफ अ कंसोल और मे बी अ सिस्टम विच इज मेड इन पाइथन, और ये चीजें इनपुट मांगेगा और आउटपुट आएगा सामने। सिंपल सी चीज है ये, बहुत बेसिक सा। तो तीन चीजें इनपुट होंगी। ठीक है, फन फैक्ट में मैंने पाइथन डाल दिया, नेम में सचिन, और एज में ये एज कहीं पे यूज नहीं हो रहा है तो वो प्रिंट नहीं हो रहा। ये आपका लास्ट के टू लाइंस प्रिंट हो रहे हैं, माई नेम इज सचिन, तो माई नेम प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में कॉमा लगा हुआ है, देन यूजर नेम आपका एक वेरिएबल नेम। ठीक है, सो दिस इज अ वेरिएबल नेम, और वी कॉल इट एज आइडेंटिफायर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द नेम, आइडेंटिफायर बोलते हैं। फिर उसके बाद में माई नेम इज होगा, आई लाइक टू लर्न। फन फैक्ट में मैंने पाइथन डाल दिया इनपुट में, तो ये ऐसे आ रहा है प्रिंट, आई लाइक टू लर्न पाइथन, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज लाइक द स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपके लाइक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, बिकॉज इनपुट एक यूजर से इनपुट कोड के थ्रू, फिर उसको यहाँ पे स्टोर करेगा, और ये आपके स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर राइट। दिस थ्री आर द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब कि वो कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा है, इनपुट ले रहा है यूजर से। ठीक है, देन वी हैव द टू स्टेटमेंट्स जो आउटपुट रिटर्न करते हैं, सो दिस इज जस्ट लाइक द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इनपुट को हम लोग एक्सप्रेशन बोल दे रहे हैं, और ये स्टेटमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ पाइथन। ठीक है, सिंपल। ये तो बेसिक सी चीजें, आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? प्रिंट करने में किसी को इश्यू है कि कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग? कॉमा सेपरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज पॉसिबल इन पाइथन, ऐसे ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं पाइथन। ठीक है, आप कोई स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो यहाँ पे, इवन वी कैन ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ उसको, एक एज भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कह दिया माई एज, और इसमें एज प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो नंबर्स कुछ भी एक भी साथ कुछ भी प्रिंट हो सकता है कोई। ठीक है, यहाँ पे फिर से लेट्स सपोज वी आर सचिन, आई डोंट नो द एज ऑफ सचिन, बट जो भी है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। सो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया पाइथन, तो आएगा माय नेम इज सचिन, माय एज इज 19 एंड आई लाइक टू लर्न पाइथन, जस्ट लाइक दिस, सिंपल। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन हैव एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? 17, चलो सॉरी भाई 17 ही कर देते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी 17 एंड दिस पाइथन, सिंपल, जस्ट लाइक दिस। तो ये प्रिंट ऊपर वाला इनपुट हो रहा है बस। ठीक है, ये दिख क्यों रहा है? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है।
तो इनपुट क्या करता है, पहले प्रिंट कर देगा, वो बोलेगा यूजर को आप नेम एंटर करो, पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, जैसे आपने सी में करा होगा। तो ये जैसे एक जैसे नॉर्मल होता है, जैसे आप कभी कोई फॉर्म खोलो, मे बी इफ यू लॉग इन ऑन द इंस्टाग्राम, इफ लॉग इन टू एनी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वो आपसे लॉगिन के लिए बोलता है ना, क्रेडेंशियल्स मांगते हैं वैसा। तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, एंटर योर नेम, या नेम लिखा होगा, इनपुट बॉक्स होगा, ठीक है। सेम इज जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका वेब नहीं है या कोई ऐप नहीं है, बट एक कंसोल है, ठीक है, पाइथन में बना हुआ, जो एक स्ट्रिंग मांगता है यूजर से, ठीक है। तो आप जब इंटर करते हो अपना यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद एज, तो वो स्टोर करता है, कंपेयर करता है, फिर आपको लॉग इन करने देता है, अगर वो सही का आईडी और पासवर्ड है, राइट, दैट्स व्हाट हैपेंस। इस वाले केस में क्या है, हम लोग कुछ कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। कंपेरिजन वो देखो, हम लोग चीजें बनाएंगे उसको, ठीक है, उसलिए वट एवर वी गोइंग टू लर्न, हम लोग क्रिएट करेंगे, एक हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे एक बैंक का जो होता है ना, मैनेजमेंट टाइप का सिस्टम। सो विल बी क्रिएटिंग दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। बिफोर यू आर गोइंग टू द इंटर्नशिप, हम लोग उससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सेशन में ही, ठीक है। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 days। तो उसमें हम लोग एक क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वो प्रॉपर एक आपका डिक्शनरीज का यूज करके और टपल्स का यूज करके एंड फंक्शंस, और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसमें, ठीक है। दैट विल बी द मिनी और मेजर प्रोजेक्ट, यू कैन इवन लाइक पास इन कॉलेज इफ यू वांट, ठीक है, और अपने रिज्यूमे में रख सकते हो आप उसको, ठीक है। एंड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज ऑल्सो इट इज नेसेसरी। जनरली आपको मिलता नहीं है वैसा, ठीक है, नॉट फाइंड दैट मच ऑफ थिंग, बिकॉज वो रियल टाइम पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, दैट विल बी डूइंग, ठीक है, जो रियल टाइम में यूज होता है, आपके बैंक में कैसी चीजें होती है, आप कभी पैसा जमा करते हो, ठीक है, कैसे वो स्टोर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेक, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग चीजें पढ़ लेंगे, राइट। सो आई होप दिस डाटा टाइप थिंग इज क्लियर। आई होप अगेन वी आर नॉट स्किपिंग दिस, वी आर पोस्टपोनिंग दिस पार्ट टू लाइक लूप्स पार्ट, ठीक है, जब तक हम लोग लूप नहीं पढ़ लेते तब तक हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे। तो विल बी ऑब्वियसली कवरिंग द इफ एंड एल्स इफ, वो छोटी सी चीज है, ठीक है, कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स, फिर हम लोग लूप्स करेंगे, then we'll come to the tuple list and dictionary. Before that, anyone have any doubt whatever we have studied today? यहाँ तक में कोई डाउट है? Let's come to the type part. एक टाइप वाली चीज देख लेते हैं, टाइप क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं ना, देखो एक पाइथन में वी यूज द टर्म, जिसलिए मैंने अभी एडवांस में नहीं गया मैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज एडवांस्ड डाटा टाइप्स। ऑब्वियसली दिस इज अ डाटा टाइप, बट पाइथन में वो एडवांस डाटा टाइप में आता है, तो पाइथन हम लोग एडवांस वाले में अभी डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे। तो दिस should be in here. Tuples, we have list, we have set also, we have dictionary. We call it map. ठीक है, कोई भी नेम यूज कर लो, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द एडवांस, ठीक है, और ये बेसिक डाटा टाइप हम लोगों ने पढ़ा भी, राइट। तो विल बी कवरिंग दिस आफ्टर द लूप, राइट। तो बिफोर दैट हम लोग ये चीजें देख लेते हैं, एक चीज और थी जो विच इज लेफ्ट फॉर नाउ, सो आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम ऑफ यू गाइस हियर। I hope this is clear. Anyone have any doubt? This is a basic thing, right? We are just doing the basic part in here. Anyone have any doubt or any other questions from this part or anything? Any question if you have learned anything in Python और अपने से आप कुछ सीख रहे हो, कोई भी doubt है, you can ask. Just let me know. You can also drop the message on that group. Okay, I'll join that group. आप उसमें ड्रॉप कर लो, मे बी टीम विल बी सेंडिंग दैट मैसेज। अगर आपको कोई डाउट है पाइथन में, या मे बी कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो लैंग्वेज कोडिंग से रिलेटेड, दैट यू कैन आस्क, ठीक है। सो इफ आई गेट द टाइम आई विल रिप्लाई। So just let me before that, we'll just jump to this part. One more thing we need to learn is, I'm just commenting this out for now. I hope this is clear. ठीक है, तो मैंने इससे कमेंट कर दिया उसको एक साथ, ठीक है, using the control backslash. Then we have the sprint. What I'll be doing, we'll be using one more function. Input is also a function. We'll come to this function later. अभी के लिए समझो, input एक predefined keyword है जो कीबोर्ड से इनपुट ले सकता है। जस्ट लाइक एक फॉर्म जो होता है आपका, कोई भी यूजर फॉर्म होता है वैलिडेशन का, वो एक इनपुट लेता है इनपुट बॉक्स के थ्रू। वैसे हम लोग के पाइथन लैंग्वेज में होता है इनपुट, ऐसा बहुत सब में होता है। स्कैनएफ होता है सी में, स्कैनएफ आई गेस सेम फॉर द सी प्लस प्लस, और स्कैनर क्लास होती है आपकी जावा में, जैसे हम लोग इनपुट लेते हैं इस आई गेस असेंड डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे कर करके लेते हैं उसमें ना। कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज दिस, और कहाँ पे, अच्छा ये जो ठीक है ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसा स्ट्रिंग लगाया था, ठीक है, ये तो बस इसके लिए प्रिंट करने के लिए, राइट सचिन, दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग आई हैव मेड। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था मैंने, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब ऐसा नॉर्मली होता है ना कि आप कहीं पे भी देखो तो नाम आपका प्रिंट होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, यूजर उसके लिए होता है बस, यूजर एक्सपीरियंस के लिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। वो एक एक्सप्लेनेशन एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वो भी एक स्ट्रिंग ही है आपका, जैसे ये लिखा है मैंने स्पेस देके लाइक दिस, तो वन के साथ में रहता है ना जो सिंबल शिफ्ट के साथ देते हैं जो, तो दिस एक्सप्लेनेशन मार्क आई हैव गिवन, दिस इज अ स्ट्रिंग, उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग लाइक सिंबल,
ठीक है, इसको भी देख लेंगे। तो दिस इज अ सिंबल वी हैव स्टोर्ड। अगेन आप देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट से कर लिया, सिंगल कोट से कर लिया, वर्क्स फाइन। पाइथन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, डबल कोट सिंगल कोट्स एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप यू गॉट द दैट कैटेगरी पार्ट जो हम लोगों ने चेंज करा था। ठीक है, आई विल बी गिविंग द प्रॉपर दिस नोट्स पार्ट। ठीक है, मैं एक मेरे पास ऑब्वियसली हैव दिस फॉर द, बट ऑन द क्लास वी आर नॉट गोइंग ऑन द दैट स्ट्रक्चर्ड वे। हम लोग सीख रहे हैं, तो वी आर जस्ट कवरिंग वट एवर विच कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो दैट नोट्स पार्ट जो भी चीजें जैसे रूल्स के रिगार्डिंग जो मैंने बता दिया आपको, वो रिटन फॉर्मेट में आई जस्ट पासिंग दैट फर्स्ट टू द टीम एंड विल बी गेटिंग इट बाय द नेक्स्ट weekend, I guess by next tomorrow, Wednesday, I can give you. Right. So I'll just give it the by the Wednesday. Here, what we need to learn is take this. Okay. So there is a function to check the data type. ठीक है, नॉर्मली हम लोग डाटा टाइप भेजते नहीं है, बट हम लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे को चेक करना है टाइप करेक्ट का। ठीक है, तो टाइप में कैसे भेजते हैं ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दिस प्रिंट एंड आई विल सिंपली रन दिस कोड। इट विल से क्लास बुलियन। ठीक है, तो दिस टाइप बाइट इज ऑल्सो अ डाटा टाइप। बाइट इज अ डाटा टाइप टू स्टोर स्ट्रीम ऑफ बफर डाटा। बफर डाटा मतलब कि इमेज आपको स्टोर करनी है या आपको ऑडियो या वीडियो स्टोर करना है इन अ वेरिएबल। ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग बाइट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द टपल, दिस इज ऑल्सो एडवांस्ड वो डाटा टाइप। इस पे हम लोग अभी इसीलिए नहीं जा रहे थे। ठीक है, इसको भी उसमें ही रखो आप। नॉर्मली तीन ही होते हैं अपने पास, बाइट, नंबर्स, बुलियंस। सो बाइट इज स्ट्रीम ऑफ डाटा। ठीक है, बाइट, अरे देखो ये होता है ना, यही चीज है बाइट, और कुछ नहीं है। आपने एमबी देखा होगा। ठीक है, या हर्ड अबाउट जीबी, देन यू हैव दिस बाइट आल्सो, जो केबी से छोटा होता है। एक केबी इक्वल्स 102 बाइट्स, अच्छा, बट ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे ही आपके 1 बाइट्स में कुछ बिट्स होते हैं। तो दैट सेम बाइट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हियर, वो बाइट एक डाटा फॉर्मेट है जो स्टोर करते हैं, जो कि एडवांस है। नॉर्मली हम लोग आप नहीं देखोगे इसमें। ठीक है, जो एडवांस और कॉम्प्लेक्स कोड लिखे होते हैं उसमें ही हम लोग इमेजेस को स्टोर करते हैं। नॉर्मली आप कोड में इमेज को स्टोर नहीं कर रहे होते। ठीक है, जो आपके वेब एप्लीकेशन होते हैं, एप्स होते हैं, वहां पे ये डाटा यूज होता है, ये वाला डाटा टाइप। वी हैव दिस आल्सो। तो भी एडवांस डाटा टाइप है ये, थोड़ा सा चीजें देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, दिस इज द एडवांस थिंग जो डाटा एनालिसिस में यूज होती है। ठीक है, जो प्रॉपर कोड होता है, जो देखो नॉर्मली अब ये कोड दिस इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। ठीक है, ऐसा कोड आप देखोगे नहीं, नॉर्मली इस टाइप का कोड लिखा होता है यहाँ पे फॉर्म बना होगा। ठीक है, तो दिस इज रिटन, लेट्स सपोज जो भी लॉग इन करता है। ठीक है, तो अभी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं, बट या विल सी दैट। तो यहाँ पे जैसे करेक्ट के लिए हो गया, लेट्स सपोज सिंबल का देख लेते हैं टाइप। ठीक है, तो ये देखो इस लास्ट है, आई जस्ट ड्रॉप ऑफ, ओके डोंट वरी, आई जस्ट नॉट टेक मच टाइम, जस्ट टेक 5 मिनट्स। सो टाइप एक फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। ठीक, विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस, डोंट वरी। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट भी एक फंक्शन टाइप का ही है जो एक पैरामीटर ले रहा है। तो विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस, क्या चीजें होती है। अभी के लिए टाइप एक, समझो एक फंक्शन है जो एक वेरिएबल नेम का वेरिएबल नेम लेता है एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल बी रिटर्निंग द टाइप ऑफ डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, मैंने सेव करा करेक्ट और सिंबल का, मेरे को डाटा टाइप चाहिए। तो व्हाट आई विल से क्लास बुलियन, जैसा हम लोग ने देखा, और एक क्लास स्ट्रिंग str, शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग। राइट, तो करेक्ट आपका क्या था, ये एक बुलियन वैल्यू थी, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, फ्लोट नंबर का भी आप देखोगे तो नंबर दिखाता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ फॉर फ्लोट, सॉरी, फ्लोट इट वुड बी, so here if I just run this code again, so it will say float, right, like which comes in the number part. ठीक है, तो नंबर में आपके दो चीजें होती हैं, इंटीजर्स एंड नंबर, फ्लोट। दो ही चीजें, डबल ओबल कुछ नहीं होता इसमें, ऐसा कुछ का। ठीक है, अगर आपको ये इसका देखना है, लाइक फॉर द एज, तो एज आपका एक नंबर है। स्ट्रिंग का भी देख लिया हम लोगों ने, एक और देख लेते हैं फॉर द एज। सो विल कवर, सॉरी वी डोंट वांट टू स्प्लिट द स्क्रीन, हियर वी हैव दिस एज। ठीक है, तो चार डाटा टाइप्स जो हम लोगों ने देखे अभी तक, everything is here just for the sake of explanation. So here we have class boolean, जो फर्स्ट वाला है करेक्ट। करेक्ट आप देखोगे क्या स्टोर कर रहा है, ट्रू। एंड सेम फॉर द रॉन्ग, रॉन्ग इज ऑल्सो बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्लास होती है बुल करके, विच स्टैंड्स फॉर बुलियन। सिंबल इज, इट इज टेकिंग अ सिंबल, बट ये स्ट्रिंग है जैसा मैंने बताया। सिंगल कोट्स के अंदर में आप कुछ भी रख दो, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग str।
float number, it takes the float and the age is int. ठीक है, int कहीं लिखते नहीं हम लोग यहाँ पे, but ये class है already, right, which is there. ठीक है, is this clear? See, we'll see this thing again because this is a predefined function. We need to understand function first. But हम लोग ऐसे डाटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है, टू चेक की क्या चीजें, जैसे हम लोग ने मान लो अगर किसी ने इंटर कर दिया, यूजर ने नंबर उसको एंटर करना था, उसने स्ट्रिंग एंटर कर दिया, ठीक है, तो हम लोग इसके थ्रू चेक करते हैं कि वो टाइप ठीक है कि नहीं, तो हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, व्हेन वी हैव टू मेक द कॉम्प्लेक्स एप्स और वेबसाइट, तो वहाँ पे वो चीजें चेक लग रही होती हैं। तो टू चेक, बिकॉज पाइथन में तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं देता ना हम लोग, दैट इज द पाइथन। तो उसके लिए भी ऑब्वियसली देयर इज अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टाइप। ठीक है, तो विद द टाइप मेथड हम लोग डाटा टाइप चेक करेंगे, उसके बाद में ही यूजर को अलाउ करेंगे कि अपने यूजर नेम ही एंटर करा है, अपने नंबर तो एंटर नहीं कर दिया उसमें यूजर नेम में। तो विल सी दैट इफ एंड एल्स कंडीशंस, वो चीजें हम लोग बनाएंगे, विल सी द each and everything. अभी के लिए is this clear? So we can wrap up. Exactly. So 8 bits is equal to 1 byte. Binary digits also can be called as bits. हाँ, वो bits ही है, नहीं देखो, बिट्स वो बिट्स नहीं है आपका, ठीक है, 0 1 वाला जो चीज है, हाँ एक तरीके से हम लोग बोलते हैं बिट्स। हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर जो आपका बाइनरी नंबर होगा ना, लाइक 1010 फॉर्मेट में, तो एक सेट बिट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट जो होगा 0 1 को, उसको हम लोग बिट बोलते हैं। ठीक है, बट डोंट रिलेट विद द मेमोरी पार्ट, मेमोरी वाला बिट इज डिफरेंट। ठीक है, हाँ आप कह सकते हो, बिकॉज मेमोरी इज अगेन सॉर्ट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, मेमोरी में एक डाटा के फॉर्मेट में ही है, तो नॉट इशू, बट दैट इज करेक्ट। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, और 1 किलो बाइट में आपका 1042 बाइट्स होता है। ठीक है, दैट सेम बाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है, देखो जनरली विल नॉट बी गोइंग टू दैट लेवल, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, बट इफ वी अंडरस्टूड फ्यू पार्ट्स, ठीक है, तो इन द एंड वी कैन लर्न दैट एज वेल। ठीक है, so is this clear? Is this clear? Anyone have any doubt? No, just let me know. So we can wrap up for today. Okay, it's already late. It's 6:40. Right? Anyone have any doubt? Okay. Okay. No, I mean, anyone have any questions? Like, you're asking question about this binary digits. So yeah, binary digits only 1 and 0. Okay, where we have this bits and all. But we have a data type also, byte. Okay, which is an advanced data type, just like tuple or list or dictionary. Okay. So tomorrow, I guess we'll be covering this list. Not tomorrow. Sorry, it'll be next weekend. Okay. So I hope everything is clear. Yep. Okay, great. No doubts. So, yeah, what we can do is I'll share this notes part. ठीक है, जो भी चीजें हुए हैं उसकी मैं proper एक notes बना के whatever we have learned, okay, the rules and all. So I'll just share in the, I'll share to the team. Team will share to the group. ठीक है. Anyone have any doubt? Obviously, you can pass into the that group. So if I get the time, I'll respond, okay, as soon as possible. Again, anyone have any doubt? Just let me know. Or to download both apps. Both the app. VS Code is enough actually. VS Code is enough. Anyone is uh yeah, VS Code is enough. VS Code is enough. Obviously, VS Code is for the name, but you have to install Python. ठीक है, like Python is not app. I mean, Python एक compiler type का है, which you need to install. Otherwise, आपका VS Code डिटेक्ट नहीं कर पाएगा Python वाली फाइल को। ठीक है, तो Python रन करना ही पड़ेगा। VS Code भी एक अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक इफ यू वांट ओनली, यू डोंट वांट टू यूज VS Code, आप बस Python में भी रन करा सकते हो। ठीक है, बट पाइथन तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इज जस्ट लाइक कंपाइलर। ठीक है, जस्ट लाइक अ सी लैंग्वेज, तो उसके बिना नहीं चलेगा, बिकॉज एक्सटेंशन जो होता है वो कंपाइलर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। मे बी देर इज दैट bunch of compilers with the extensions also, not sure, but a simple way is to install python first। ठीक है, जब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाए, फिर उसके बाद आप वर्जन चेक कर लो, अगर प्रॉपर वर्जन मिल रहा है देन यू कैन जस्ट इंस्टॉल द VS Code। VS Code एक्चुअली इज, यू कैन रन एनी लैंग्वेज। ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज चल जाता है उस पर। सो इन दैट केस VS Code प्रेफर होता है, VS Code रख लो। ठीक है, इफ यू वांट टू डू कोडिंग एंड ऑल, तो आई गेस VS Code इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, दैट विल बेटर एक्चुअली। हाँ, आपको दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, VS Code आप इज ऑप्शनल, VS Code इज ऑप्शनल। आप VS Code नहीं करना चाहते हो, दैट इज ऑप्शनल, बट पाइथन इज नेसेसरी। ठीक है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज वो कंपाइलर है। कंपाइलर ही नहीं करोगे तो एक्सटेंशन से VS Code के नहीं चलेगा पाइथन का कोड। सेम उस पर जावा, अगर आपको जावा रन करने हैं तो आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो JDK में कंपाइलर नहीं होता। JDK इज जस्ट लाइक दैट बंच ऑफ JVM एंड टूल्स जो रन करने में हेल्प करेगा। तो VS Code सपोर्ट कर सकता है जावा को, डायरेक्ट रन नहीं करा सकता। ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, या इट्स गुड। आई मीन, आपने VS Code करा तो ठीक है। एनी लाइक इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, जस्ट लेट मी नो।
ठीक है, तो we'll see that in the next class, और लेकिन you can ping on that group also, मेरे को मिलेगा तो I'll just share the solution also कि क्या प्रॉब्लम होगी इसमें इंस्टॉल करने में, तो क्या ठीक हो सकती है चीज़ें, ठीक है। They'll stop the recording.